Welcome all. In this session, I'll be discussing GATE 2025 Solid Mechanics XE question paper. There are 22 questions. So, how can this benefit the for the students preparing for the upcoming GATE 2026 examination? So, in solid mechanics XE syllabus, we have like basic engineering mechanics, strength of materials, and vibrations. Then we have velocity acceleration analysis from theory of machines. So these things will be revised so that it will benefit you in your GATE ME paper as well as XE paper. So wherever concepts are required, I'm not just covering the question, I'll be giving you concepts so that I'll try my level best to cover in an efficient in the sense time saving mode में हम अच्छा नीटली डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस और टाइम सेविंग मोड में करेंगे. ओके चलो, डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू फॉर द अपकमिंग गेट 2026 एग्जामिनेशन. सॉलिड मैकेनिक्स, सम वाइब्रेशन क्वेश्चंस. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. आई विल बी टचिंग nearby concepts so that it will brush up your concepts also. Okay chalo, let's get into the session without wasting time. Chalo, let's take the first question. Let's take the first question. Okay, consider a spring mass system with mass m and a stiffness of the spring k. At a time t is equal to 0, the mass is displaced by p units. This mass at time t is equal to 0 is displaced by p units. Okay, no problem. It can be displaced like this or like this. No problem. Chalo, koi baat nahi. And the displacement x as a function of time measured from the equilibrium position is, this is the equilibrium position. So initially it is at equilibrium position. Okay, no problem. And this mass is displaced by p units. This is p units. Okay. Now, it is displaced at time t is equal to 0. This block or this mass is at this position. And he also said, dekho, the velocity of the mass is 0 at time t is equal to 0. Okay, the position is, and every distance is measured from here. This is the mean equilibrium position. So, initially, when time t is 0, I can say my x is p and the velocity x dot is 0. This is the position initially. Now you pull it and release it. It oscillates. It makes vibrations. Okay. Now I have a question. From the mean equilibrium position, will it go any further away? No, this because in the middle you are not supplying any energy. So with its own energy, it is oscillating. So this is the maximum position. So I can say this x is equal to p is also amplitude. So at a time t is equal to 0, the amplitude it is at p position and the velocity is 0. Now you are releasing. With this information, let us start, my dear students, the analysis. He is asking us to show displacement as a function of time. Okay. You know that I have already derived in my regular classes. So x is equal to, displacement is equal to a sine omega t plus phi, where omega is natural frequency which is given by, which is the property of a vibration system, because the stiffness is not changing, mass is not changing, so it is constant. Okay, no problem at all. This is the position for a simple harmonic motion. This is the equation, and already I told you the significance of phi. It shows the initial lag, what is the position of the mass from the mean position. This is shown by this exactly. So clearly he said, and the amplitude is given by p. You know, at time t is equal to 0, it is at the extreme position. So x is equal to p, which is nothing but amplitude. Yahan se आइए. So x is equal to, initially when time t is 0, x is p, which is amplitude also. A का मतलब amplitude which is p sine omega. Time is 0. Okay, at time t is 0 plus 5. Okay, so ये गया. So 1 is equal to sine. This is omega into 0 is 0. 0 plus 5 is 5, sine 5. Sine 5 is equal to 1. So when is sine 5 1? When phi is 90 degree. So phi is equal to pi by 2. This is my first. Okay, no problem. Now let's take this equation. So x is equal to, ध्यान से सुनिए, a. What is the amplitude? P. Okay, sine. And you know omega t. Omega can be written as root k by m into t plus phi. Phi is 90. Okay, what is sine 90 plus theta? Sine 90 plus theta, cos theta. So therefore, x can be written as p sine 90 plus c is cos
root k by m into t. This is the equation. Displacement as a function of time. This is the equation. Okay, these are harmonic functions. Sine, cos, these are harmonic functions. And you know the equation is given by the displacement p cos root k by mt. एक बार चेक करते हैं सर. We'll check p cos root k by mt. P cos root k by. So option D is correct. So first answer is D, that is root k by m. Is it clear? Yes. The basic takeaway from this question is, if you do not know fundamentals, if you do not know displacement as a function of time, you cannot do this question. That's why simply by hearting equations is not sufficient. You should grow beyond that. Okay, very good. Next question. Second, a ball of mass phi m approaches a stationary ball of mass m with a horizontal velocity of 2 meters per second from left to right. After a perfect collision, the horizontal velocity of heavier ball is 1 meter per second from left to right. Which one of the following statements regarding the velocity of the lighter ball after impact is true? Okay, it comes to rest, it moves from left to right, it moves from right to left, it moves. So he is in fact asking the velocity of lighter ball after collision. So पहले हम क्वेश्चन को ले लेंगे सर. देखो एक बार क्वेश्चन ले लेंगे. So this is the ground, let us say. This is the smaller ball with mass m and its velocity is initially 0 because he said, देखो एक बार, approach a stationary ball of mass m. This is mass m, stationary means velocity 0. And there is a bigger mass which is phi m and it is moving at what velocity, sir? कहाँ गया? Horizontal velocity, exactly, horizontal. So, and he said from left to right, देखो left to right, and this velocity is equal to 2 meters per second. And definitely, as it is stationary, this ball will come and hit this. Matlab there is a collision. What does collision mean? At the same time, the two bodies occupy same position. At the same time, they occupy the same position. That is collision. Definitely, they collide. This is initial. Now, after collision, I don't know what is happening to the mass of this. Chalo, I don't know. Let it be equal to u. Let me write this as u2. I don't know what is the value, whether it is right or left, I don't know. Let me take left to right in the positive x direction as velocity as positive. So अगर ये value positive आता है तो it moves from left to right. If I get this value negative, it moves from right to left. I don't know. Common sense says heavier है, इसको impact करेगा, तो definitely ये उधर ही जाएगा. ये मेरा common sense है. चलो कोई problem नहीं. Now finally he said this phi m mass is moving from left to right at 1 meter per second. देखो एक बार, heavier ball is moving at 1 meter per second. मेरे प्यारे दोस्तों, is there any external force? No. So whenever the external force is 0, net external, I'm talking net external. Therefore, the conservation of momentum is applicable. So let us apply the conservation of linear momentum. Let us apply the conservation of linear momentum. What is conservation of linear momentum? m1 u1 plus m2 u2 is initial momentum must be equal to m2 u2 plus m1 v1 plus m2 v2. Okay, इसका initial momentum क्या है? देखो, mass into velocity is 2 plus its mass is m, velocity is 0. So this is the initial momentum. ये तो 0 होगा. So this is the initial momentum. Now let's calculate the momentum of this. Phi m into 1 is the momentum of this plus mass into velocity u2. This is the momentum of this. So this is the final momentum, which is phi m plus m u2. Now my dear students, this momentum you equate. So what do I get? Phi m plus m u2. Excellent. तो ये इधर आएगा 10 minus 5, this is phi m is equal to m u2 and this is gone. So I got u2 as 5 meter per second. What does it mean? The final velocity of the lighter mass is 5 meter per second and I got positive. Positive का मतलब left to right. So the final velocity of the lighter mass is 5 meter per second from left to right. Option है sir? Moves from left to right at, yes, B is the right answer. Absolutely. B is the right answer मेरे प्यारे बच्चों. Okay sir? Okay sir. बोलो सब लोग एक बार. Okay sir? Okay sir. Now, let's move to the next question. कहाँ गया वो? Third वाला. देखो. Okay. The Morse circle corresponding to an infinitesimal element is shown. So, a small element, the Morse circle is shown for this loaded member. Okay.
the plane PQ, there is an oblique plane PQ, and it is at an angle theta from with respect to x-axis. Okay, is in a state of pure shear. So can I say this is the state of pure shear? So this is clockwise. So this should be anti-clockwise. देखो एक second, clockwise, anti-clockwise. Correct. देखो, or this can also be a pure shear. This is anti-clockwise, so this will be clockwise. Okay, clockwise, anti-clockwise, equilibrium. So ये है anti-clockwise, ये है clockwise. This can be pure shear. This can be pure shear. These two, any situation depending on the direction of shear, these are the pure shear. Okay, कोई problem नहीं sir. Now, very simple question sir. एक बार देखिए इसको. So what is the major principal stress? It is sigma naught. What is the minor principal stress? It is minus sigma naught. So if I show you the major principal planes and minor principal plane, this is sigma naught, and you know this is minus sigma naught. So this is sigma naught, and this is sigma naught, and this is sigma naught. So these are the principal planes. Okay, now you have already studied the principal planes and the planes of maximum shear are at 45 degree. तो आप पूछेंगे, sir, on maximum principal plane there is a normal stress. How can it be in a pure shear? I agree to your point. मुझे पता है sir, on maximum shear plane, normal stress need not be zero. So normal stress is average of these two stresses, sigma x plus, and you know the sum of the normal stresses on any two mutually perpendicular planes is constant. So therefore, whether it is sigma x plus sigma y or sigma 1 plus sigma 2, it is constant. So therefore, एक बार देखो sir. Now what is the shear normal stress on maximum shear plane? Sigma naught plus minus sigma naught by 2. तो ऐड करेंगे तो this sigma naught average plus minus sigma naught by 2, this is 0. इसका मतलब the normal stress on the maximum shear is 0. When the normal stress on the maximum shear plane is 0, it means there will be only shear stress. So that will be pure shear. So you know this is the maximum shear plane. Maximum shear plane or maximum principal plane will be at 45 degree. Already we have studied. So therefore it is at 45 degree. So therefore pure shear will be at 45 degree. दूसरा एक तरीका, this is one way. The other way is, देखो, this is the major principal plane. देखो, this is in the state of pure shear. यहाँ पे कोई normal stress नहीं है सर. यहाँ पे कोई normal stress नहीं है. यहाँ पे कोई normal stress नहीं है. Pure shear. So therefore, इसके respect से कितना है सर? 90. On more circle, if it is 90, the actually it will be 45 degree. Therefore, it is 45 degree. Okay. So this is the answer. Simple way में हम कर दिए सर. Next. A two-dimensional state of stress on an infinitesimal element is given. देखो एक बार देखो, सिग्मा एक्स एक्स, आई राइट इट एज सिग्मा एक्स एक्स को सिग्मा एक्स लिखूंगा, इट इज 80. पॉजिटिव है तो इट विल बी टेंसाइल. एंड सिग्मा वाई, देखो सिग्मा वाई वाई इज 0, मींस ऑन दिस प्लेन देयर इज नो लाइक व्हाट आई से, क्या बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस. एंड सिग्मा एक्स वाई, व्हाट डज सिग्मा एक्स वाई मींस? शियर स्ट्रेस. इट मे बी लाइक दिस, tau xy लिखेंगे. I write sigma xy में shear stress it is 300. It may be down up depending on the direction, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा क्लॉकवाइज का. देखो ये क्लॉकवाइज, ये बिकॉज एवरी टाइम इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, राइट लेफ्ट इक्विलिब्रियम, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज इक्विलिब्रियम. सो दिस tau xy ये दिया है सर. नाउ ही इज आस्किंग मैक्सिमम shear stress. वी नो दैट द इक्वेशन, ये बहुत रेगुलर क्वेश्चन आता है सर, ये दिस कम्स रेगुलरली. द मैक्सिमम shear stress is given by, already we know, it is also the radius of Morse circle or under root of sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau xy का whole square. So therefore the maximum shear stress is given by under root of sigma x is already given as 800 and sigma y is 0 by 2 का whole square and plus tau xy. What is tau xy? It is 300 square. So therefore the maximum shear stress is equal to, this is 800 by 2 is 400. 400 square plus 300 square is 500. So the maximum shear stress is, if that is in megapascal, it will be in megapascal. So option A is correct. Option A is correct. 500. Okay. चलो. Question number क्या है सर ये? एक बार देखता हूँ. 4 ना? 4, 4, 4, 4, 4. Yes. Next we'll move to 5th. अच्छा क्वेश्चन है सर, प्लीज रीड द क्वेश्चन. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर आई प्रोसीड. एक बार पढ़ो, आपको टाइम दे रहा हूं सर.
आई एम गिविंग यू टाइम. Now, क्वेश्चन नंबर 1. टू कार्स P and Q, ठीक है, आर ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ 60 मीटर अपार्ट. मतलब इनका क्या है ना, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 60 मीटर. ओके, कार P is moving at a constant velocity of 36 किलोमीटर पर आवर. लेट मी कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड, चलो लेट्स कन्वर्ट इट. एक सेकंड, इसको इधर रख देंगे. सो 36 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, hour means 3600 second. 36 गया 20 10 मीटर पर सेकेंड. सो दिस वेलोसिटी इज, वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. तो इससे हाफ है सर, इट इज 36, इट इज 18. तो अगर ये 10 है तो ये 5 होगा. 18 इंटू 1000 बाई 3600. तो यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ P एज कितना सर, 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है सर, दीज आर गिवन एंड द गैप बिटवीन देम इज 60 मीटर. ओके, at this instant, and one more thing, while car Q is also moving at a constant velocity, both these are moving at a constant velocity. Its velocity is 10 and its velocity is 5. दोनों एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. चलो, at this instant ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स. इस पे ब्रेक मारा है, किस पे मेरा है, कार P अप्लाइज ब्रेक्स एंड द कोलिजन अकर्स. मतलब ये तो हाई स्पीड पे जा रहा था, तो ब्रेक मारा तो वो जाके कोलाइड हुआ. दे कोलाइडेड कहां पे, व्हेन आफ्टर 30 सेकेंड्स. द कोलिजन टुक प्लेस आफ्टर 30 सेकेंड्स. मतलब जहां से हम एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम देन 30 सेकेंड्स के बाद. Assuming uniform deceleration, whenever the term uniform acceleration, uniform deceleration comes, our equations of motions are ready. V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square minus U square is equal to 2S. Note down that these equations must be applied only when acceleration is constant, uniform acceleration. नहीं तो मत apply करना. Okay, then you have to go for a small distance and integration. वो अलग चीज है sir, which I explained already in my mechanics class. Which of the following is the correct velocity of the car P? He is asking the velocity P just before, मतलब कोलाइड होने से पहले P का वेलोसिटी क्या है. तो आप बोलेंगे सर P is moving at constant velocity. वो ब्रेक अप्लाई करने से पहले का सिलसिला है. So P is moving at a uniform velocity of 10 when brakes, before the application of brakes. So this is moving at uniform velocity. This is, so you have applied brakes on this. Now how to proceed sir? A good question. तो चलो कैसे प्रोसीड करेंगे. ही इज आस्किंग द वेलोसिटी ऑफ दिस कार. आई रिपीट, वेलोसिटी ऑफ दिस कार आफ्टर 30 सेकंड्स. 30 सेकंड्स के बाद कोलिजन हुआ. तो क्या करूं सर, एक काम करते हैं सर, लेट अस अज्यूम दैट समवेयर द कोलिजन इज टेकिंग प्लेस. यहां पे तो जगह नहीं है, आई डोंट हैव. लेट अस अज्यूम दैट यहां पे कोलिजन हुआ, यहां पे. सो तो कोलिजन जब हुआ, यू नो वेरी वेल, दिस विल, लेट अस अज्यूम दैट दिस P इज ट्रैवलिंग SP. It has displaced from here to here, and this Q will move from where, here. So here, यहां से यहां गया. चलो कोई बात नहीं. This is the displacement of Q. Q displaced from this to this, and P displaced from this to this. Exactly, sir. And what is this distance, sir? 60. Can I write, because at the collision point both should be at the same position. So my Q is covering this much distance and my P is covering this much distance. Or rather I said displacement. Okay, to be precise. So देखो, क्योंकि can I write this as displacement of P is equal to 60 plus displacement of Q? Absolutely I can write. Okay, because it should cover extra 60, then whatever it has covered, then this will occupy its position. ठीक है sir. Now can I apply the equations of motion S is equal to UT plus half? Yes, I can apply it, because this is moving at a uniform. When brakes are applied, जब brakes apply किए तो it is a uniform deceleration. apply करो. UT, what is the initial velocity of this T? After how much time the collision has taken place? 30 seconds. UT plus half. The acceleration is a T square. Time is 30 seconds. 30 square. This is equal to 60. Plus displacement of Q, and Q is moving. We have not applied brakes to Q, and it is moving at a uniform velocity. Whenever the velocity is constant, displacement is equal to velocity is equal to displacement by time. So displacement is velocity into time. This should be applied when the velocity is constant. So its velocity is 5 and the time, its velocity is 5 and the time is 30 seconds, because 30 seconds में collision हो रहा है. 5 into 30. Okay, fine, no problem at all. Absolutely fine.
तो लेट्स प्रोसीड माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ देखो, so this can be written as 300. This is 900 by 2 is 458 if I am not wrong. एक बार चेक करता हूं सर. 900 by 2 is 458 and this is equal to this is 150, I think 210 na. Is it 210? Should be correct na. Right. So therefore now 450A is equal to 210 minus this is minus 90. So A will be equal to minus 90 by 450. Calculator कहाँ है रे? 450 by 90. 450, sorry, 90 by 450.2 minus 0.2 meter per second square. Now you may be wondering, sir, what do I do by calculating this? ये calculate करके मैं क्या करूं? Very simple, sir. What is he asking, sir? इसका final velocity. You know its initial velocity is 10. I don't know its final velocity. I know the retardation and I know the time. कितना टाइम में वहां तक आ रहा है सर? 30. Can I apply? The final velocity is initial velocity plus 80, absolutely, because it is decelerating uniformly. So the final velocity, I don't know. The initial velocity of this is 10 and the acceleration is 0.2, of course minus, and the time is 30 seconds. So V is equal to 10 minus, ये 10 minus 6 होगा, 0.2 into 36. So V is equal to 4 meter per second. So therefore the final velocity, the velocity of this car P when it collides, मतलब यहाँ, so it will be 4 meter per second. Option है sir? Yes है. Option is there. Option is there. Wonderful sir. अरे यार फिर क्यों ये erase हो रहा है? Yes, very good. So let's move to the next question sir. Next is, हाँ देखो, the natural frequency of a spring mass system is 10 radian per second. You know in vibrations, omega is equal to the natural frequency is the stiffness to the ratio mass taken square root. Okay. Which of the following is R? मतलब this is MSQ is R. तो option A देखेंगे. So which combination is giving? कितना दिया sir? This is given as 10. Which combination of mass and stiffness gives you 10 radian per second? Let us check. So in first case mass is 10, stiffness is this. So what is the first case? K by M. K is 1, M is 100. So this is 1 by 10 which is 0.1. So it's not matching. It's not matching to 10. Let's take option B. Root K by M. What is K sir? The stiffness in B is 125 and M is 1.25 and ये आ रहा root 100 which is 10, means ये match कर रहा है sir. So option C. Let's take root K by M. K is 620 and mass is 6.2. एक बार धोखा हो सकता है sir. He may be giving this in kilonewton per meter. So be careful. Sometimes it is very dangerous. Checking units is very important in examination, especially with NAT questions. So this will be by 10 तो कितना आ रहा है? 60 to 100. तो 10 आ रहा है सर. ये भी 10 दे रहा है. Yes, this is also giving 10. Next, option D. Root K by M. K is 62 and M is 620. So this is not giving 10. So therefore B and C are the correct option. B, C are correct options. Okay sir. चलिए. Let's move to the next question. हाँ. Consider देखो एक बार सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सर. सो व्हाट इज टू बी डन व्हेनेवर क्वेश्चंस आर सिंपल, डोंट बी इन हरी. तो टेक दैट एज एन एडवांटेज, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, क्योंकि सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड. व्हेन क्वेश्चंस आर सिंपल यू मे बी टेम्प्टेड टू टेक इट लाइटली. सो ऐसा मत करना, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. चलो नाउ देयर इज अ स्क्वायर सेक्शन गिवन. ओके, द डायमेंशंस आर 10 by 10. फ्रॉम दैट देखो एक बार, इधर से 1 mm, इधर से 1 mm, and this portion is removed. So whatever the portion is left, for that portion is asking the moment of inertia, that is area moment of inertia पूछा है सर. तो क्या करेंगे सर? For a rectangle, the moment of inertia is BDQ by 12. But if it is a square, my B will be equal to D. तो B power 4 by 12 or D power 4 by 12, whatever it may be. Side power 4 by 12. तो क्या करेंगे सर? ये total square में से, which is of dimension 10 side, में से आप अंदर का निकाल दो, बिकॉज इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट ऑफरिंग एनी रेजिस्टेंस. तो ये 1 है,
ये भी 1 है, सो आउट ऑफ 10 एज इट स्क्वायर, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, सो आउट ऑफ स्क्वायर है तो 10 में से 1 1 निकालना तो 8 आ जाएगा सर, दिस विल बी 8। सिमिलरली फ्रॉम दिस हाइट इज 10, तो ये 1 निकाल देना, तो 10 में से 2 निकाल देना तो ये हो जाएगा आपका 8। तो इट मींस फ्रॉम द 10 by 10 स्क्वायर यू रिमूव 8 by 8 स्क्वायर, तो क्या होगा सर, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 10 bd cube by 12 माइनस 8 इंटू 8 क्यूब बाई 12। ओके, तो कितना आएगा सर, आई थिंक मुझे पता नहीं सर, 492 यूनिट क्या होगा सर, मिलीमीटर पावर 4, बिकॉज दिस इज mm, दिस mm क्यूब, सो देयरफॉर इट इज अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, सो आंसर इज 492। एक बार और बता रहा हूं सर, आप ऑफिशियली गेट की से चेक कर लेना 2020 से, बिकॉज आई हैव नॉट चेक्ड, एक बार चेक कर लेना। वो चेकिंग का मतलब रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट के फॉर्म में बता देना, सो दैट विल डिस्कस। ओके राइट, नेक्स्ट ये वाला, for a certain linear elastic isotropic material, the Young's modulus is 140 gigapascal and the shear modulus is 50 gigapascal, rigidity or shear modulus, ठीक है सर। The Poisson's ratio is, this is generally a regular question sir, this is a regular question, so you know the relationship between Young's modulus and shear modulus, तो क्या पता कल सेम क्वेश्चन बल्क मॉडुलस के फॉर्म में आ सकता है, तो E is equal to 3k into 1 minus 2 nu, you should know the relationship between various elastic constants, so if this is in gigapascal, keep this in gigapascal, so no problem, both are moduli of elasticity, so keep in the consistent units, so E is 140 is equal to twice G is 50 इंटू 1 प्लस न्यू, सो ये 100 हो गया सर, 140 100 का मतलब 100 इधर आया तो 1.4 होगा, 1.4 इज इक्वल टू 1 प्लस न्यू, सो न्यू इज इक्वल टू 0.4, सो देयरफॉर द आंसर इज 0.4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9। गुड क्वेश्चन, देखिए सर, ए फोर्स 100, यहां पे फोर्स कितना है सर, ये 100 न्यूटन, ठीक है, is applied at the ends of a plier, this is a plier, okay fine, neglecting the friction, जहां यहां पे हिंज है तो यहां पे फ्रिक्शन, यहां पे फ्रिक्शन, यहां पे फ्रिक्शन, वो बोला neglecting friction, the force exerted by the upper jaw, this is the upper jaw, this is the lower jaw, on the workpiece, मतलब ये वर्कपीस के ऊपर, on the workpiece, how much the force the jaw is exerting। तो एक काम करता हूं सर, मैं इसको सेपरेट करके दिस पोर्शन, ये वाला दिस पोर्शन, इसको हटा देंगे सर, विल रिमूव दिस एंड ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम, देखो लाइक दिस, तो यहां पे हिंज है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो हमने एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स यहां पे अप्लाई किया, what is the magnitude of he is asking on the upper jaw, therefore I am taking this portion, had he asked on the lower jaw I would have taken this, but anyway symmetric है तो सेम ही तो रहेगा, तो P is equal to 100 न्यूटन, कोई बात नहीं। यहां पे हिंज है तो एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, सॉरी एक वर्टिकल रिएक्शन y, एक हॉरिजॉन्टल, आई डोंट नो द डायरेक्शंस वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, मुझे तो पता नहीं हिंज है। अब देखो सर, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्लोज करेगा सर, सो दिस अपर एंड ऑफ द जॉ विल एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन दिस, जब ये डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा तो ये वर्क पीस क्या करेगा, ऊपर, आई रिपीट, so this when you are applying a force like this will close, means this lever is exerting a force in the downward direction on the workpiece, downward, so workpiece will exert in the upward direction, so therefore it will be like this is the force F, he is asking the force exerted, so if the action is like this, reaction will be like this, koi baat nahi sir, so whatever the only direction will change, the magnitude will remain same, this is the force exerted by this on this or exerted by this on this, the magnitude will be same, only direction will change। okay, what is this distance sir, this is 100, तो ये है 100, this is 100 और ये कितना है सर, this is 25। अब क्या करेंगे सर, हाँ, सो इट्स बेटर बिकॉज आई डोंट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटीज, तो यहां पे मूवमेंट ले लेना, दीज टू फोर्सेस आर पासिंग टू दिस पॉइंट, द मूवमेंट्स ऑफ दीज टू फोर्सेस विल बी जीरो ओवर दिस पॉइंट, सो P इंटू 100, अगर ये mm में है तो ये भी mm में है, तो P इंटू 100 क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू F इंटू 25 एंटी क्लॉकवाइज, तो अप्लाई करो P इंटू 100, दिस इज क्लॉकवाइज
should be equal to F into 25. This is anti-clockwise. So therefore P is 100 into 100 should be equal to F, I do not know, into 25. तो ये 25 ones, 25 fours, 100 into 4. So F is equal to 400 Newton. So the force applied is 400. It is a fill in the blank question. I think ऐसे क्वेश्चंस को वो रेंज नहीं देगा सर, शायद. Okay, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं देगा. Because directly you are getting integer. Okay, right. So the answer is 900. We'll move to the next question. अच्छा क्वेश्चन है सर ये. Consider two blocks P of mass 100, Q of mass 150, resting as shown in the figure. This angle theta is this angle 30 degree. The coefficient of friction between two blocks, this is one block, another. So here the coefficient of friction between these two surfaces is 0.2. Okay, assume no friction exists at all other interfaces. ध्यान से सुनो. There is one interface. There is one interface. So यहाँ पे friction नहीं दिया है सर. So actually this question is taken from Irwin Shames, because when I teach mechanics I took questions from Shames also. I took questions from Mariam Craig also, because ये दोनों किताबों से directly theory of machines और क्या बोलते हैं engineering mechanics you are getting direct questions. So this question is taken from Shames, engineering mechanics by Shames. Okay. Which of the following options is closest correct magnitude of W? तो W देखो ध्यान से सुनो. The minimum force required to move the block P upward. मतलब क्या force apply करना चाहिए? What should be the value of this force which is towards the left, so that that minimum force will lift this, will move it in the upward direction of the block P को upward करने के लिए. ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन है सर. तो इसको एक बार वैल्यू देखेंगे. फ्रिक्शन एंगल 30 दिया है और फ्रिक्शन 0.2 दिया है. दैट्स इट. ओके चलो, ये नया सेटअप है, थोड़ा मुझे यूज करने में टाइम लगता है. ओके कोई बात नहीं सर. एक काम करते हैं सर, लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस एंड दिस. ओके नाउ देखो, जब ये ब्लॉक इधर आ रहा है तो इसके रेस्पेक्ट से ये इधर आएगा. तो फ्रिक्शन ऑन दिस, इसकी बात कर, आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू. So as this is moving towards the left, so मतलब ये ऐसा जा रहा है, तो friction opposes relative motion. I repeat, I stress the word relative. ध्यान से सुनो सर, friction relative motion को अपोज करेगा. इसके रेस्पेक्ट से ये इधर आएगा, इधर आएगा, तो इसके ऊपर Q के ऊपर friction force will be opposite to the relative motion. तो पहले हम Q को ड्रॉ करेंगे सर. जगह है, चलो. This is mass of Q, which is 150 G, because mass is given as 150. Okay, ये Q है सर, Q है. And यहां से एक reaction आएगा, which is in the upward direction. Say it is R1. So there is a force W. Okay. Now ये इधर आ रहा है सर. This is trying to move to the left. So frictional force will be to the right. So मान लो दिस ब्लॉक इज एक्सर्टिंग अ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ R2. ये वाला ब्लॉक इस पे R2 एक्सर्ट कर रहा है. सो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अगर ये R2 है, अगर ये देखो नॉर्मल रिएक्शन R2 है, तो ये होगा म्यू R2. ये होगा म्यू R2. बिल्कुल सही है सर. इज इट ओके? यस. तो इसके ऊपर क्या फोर्स होंगे? जस्ट ये कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेस पे उल्टा होगा. देखो एक बार, जस्ट रिवर्स. कहां लिखेंगे रे बाबा? ये देखो, ये वाला ले लेंगे. दिस इज 100G. ठीक है सर, 100G. तो यहां का एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा. ये R1 है, R2 है, तो ये R3 ले लेंगे सर. यहां पे वेट आ गया. सो सेम दीज आर द कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस ना. तो इस पे एग्जैक्टली द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. तो ये उल्टा हो जाएगा सर. सो दिस विल बी आवर म्यू R2. ठीक है. अगर ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड इट विल बी R2. यस, खत्म सर. I think the free body diagram is complete. I have shown the forces. Weight show किया, इधर का रिएक्शन, ये दो, तो इस पे क्या है सर? 1 2 वेट 3 4 5. करेक्ट. नाउ देखिए सर, बिफोर वी डू आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन सर. एक बार देखना, दिस इज वन सरफेस, दिस इज वन सरफेस. एक देखो, ये एंगल इज 30. मैं एक छोटा सा बताऊंगा सर. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टेल. सो लेट मी ड्रॉ टू दिस सरफेस. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा सर. ठीक है सर. अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इस सरफेस को, तो ये 90 होगा.
बिल्कुल ये 90 होगा। सो इसको जनरलाइज करेंगे सर, विल जनरलाइज इट, एक सेकेंड। तो लेट इट बी थीटा, ठीक है। अगर ये 90 है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, एब्सोल्युटली फाइन। नाउ देखो एक सेकेंड, ठीक है सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एंड ऑलरेडी यू नो दिस इज 90, एक्सलेंट सर, एक्सलेंट, दिस इज 90। तो ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एंगल कितना होगा सर? देखो एक बार, सेम लाइन हॉरिजॉन्टल, तो टीटा, सेम लाइन हॉरिजॉन्टल, तो ये टीटा होगा। अगर ये टीटा नहीं आ रहा, सेम लाइन हॉरिजॉन्टल 90 माइनस टीटा, सॉरी इसको थोड़ा इरेज करूंगा सर, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं सर, थोड़ा वीक स्टूडेंट्स है उनके लिए ये सब है। ओके, सेम लाइन हॉरिजॉन्टल 90 माइनस थीटा, सेम लाइन हॉरिजॉन्टल 90 माइनस थीटा। अरे यार, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो दिस विल आल्सो बी 90 माइनस थीटा ओनली। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। ओके, चलो, तो इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, बट दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, तो ये कितना होगा सर? 90 माइनस थीटा, सम ऑफ द एंगल इज 90, तो ये थीटा होगा। इसका मतलब इसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वर्टिकल ड्रॉ करके तो थीटा आएगा। तो इस इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलर वर्टिकल सेम एंगल, इस इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल जो एंगल है, इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर और वर्टिकल, मतलब कहने का क्या है ना, इस इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर और वर्टिकल ये थीटा होगा। जैसे इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल का थीटा है, इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल, तो इंक्लाइंड वर्टिकल इट विल बी थीटा, जैसे इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल थीटा है, वही तो बताने का था मुझे। दैट्स इट, होप यू अंडरस्टूड सर, नो प्रॉब्लम सर, वी हैव अंडरस्टूड सर। नाउ अब आगे बढ़ेंगे सर। क्या पूछ रहा है सर? व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? इन द क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड द वैल्यू ऑफ W। तो एक काम करता हूं सर, W इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वर्टिकल का कोई रोल नहीं है सर। एक बार क्वेश्चन को एनालाइज करो, W is in the horizontal direction, there is no role of vertical, मतलब there is no need for us to find out the value of R1. So if I want the horizontal equilibrium, there is a component of this in the horizontal direction, there is a component of this in the horizontal direction. ये दो के horizontal should be equal to this. So I should find out, mu is already given. Somehow if I find the value of R2, the problem is solved. तो R2 कर सकते क्या सर? एक बार देखो, R2 कैसा है सर? एक बार देखो, तो R3 फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? द रीजन बीइंग, माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, तो मैं क्या करता हूं, ये 100G वर्टिकल है, तो R2 का वर्टिकल कंपोनेंट, म्यू R2 का वर्टिकल कंपोनेंट आई इक्वेट, सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका डाउनवर्ड, तो R2 आ जाएगा, दैट R2 आई पुट इट हियर। एक बार देखते हैं सर, देखो प्लीज लिसन, दिस इज योर म्यू R2, दिस इज एंगल थीटा, तो मुझे ना वर्टिकल को चाहिए, हॉरिजॉन्टल जरूर नहीं, वर्टिकल, तो विच वन इज वर्टिकल? तो ये डाउनवर्ड आएगा सर, ये अपोजिट है, तो इट विल बी म्यू R2 साइन थीटा, इसका म्यू R2 का। अब दूसरा है R2 एंड दिस एंगल इज थीटा, तो आई वांट इसका ये अपोजिट है, तो ये साइन होगा, आई डोंट वांट हॉरिजॉन्टल, आई वांट वर्टिकल, तो इट विल बी R2 cos थीटा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इज R2 cos थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इज इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज म्यू R2 sin थीटा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज 100G प्लस इसका डाउनवर्ड, तो इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट इट इज म्यू R2 sin थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू इसका अपवर्ड कंपोनेंट, द अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ R2 इज R2 cos थीटा। सो एक बार देख लेना सर, तो 100G इज इक्वल टू R2 को कॉमन ले लेना, ये उधर जाएगा, तो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ऑलरेडी थीटा इज गिवन टू अस एज 30, तो 100, G is 9.81, R2 I do not know, cos 30 is root 3 by 2, directly I'm writing sir, directly I'm writing, so cos 30 is root 3 by 2 minus mu is 0.2 and sin theta is half, तो यहां से let me calculate R2, root 3 by 2 फटाफट करेंगे, minus 0.1, तो into 100 into 9.81, ये आ रहा है 1280.6 न्यूटन। वंस R2 इज नोन, अब बाकी का खेल इजी है सर, एक सेकंड, देखो बाकी का खेल क्या है, देखो यहां पुट करेंगे, ये लेफ्टवर्ड, तो इसका एक कंपोनेंट देखो, दिस इज R2, हाँ जी, एंड दिस इज थीटा, आई वांट W मींस हॉरिजॉन्टल, तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस? इट विल बी R2 sin थीटा टुवर्ड्स राइट, तो इसका दिस इज म्यू R2 and this is theta,
आई डोंट वांट वर्टिकल, आई वांट हॉरिजॉन्टल, तो इसका हॉरिजॉन्टल का अपोजिट इज साइन, तो ये म्यू आर टू कॉस थीटा, तो इसका द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस इज राइट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज राइट, टोटल राइट शुड बी इक्वल टू टोटल लेफ्ट, सो W इज इक्वल टू दिस इज म्यू आर टू कॉस थीटा प्लस आर टू साइन थीटा। तो एक काम करते हैं सर, W इज इक्वल टू म्यू इज R2 को बाहर ले लेना एंड R2 इज डायरेक्टली यहां पे पुट करेंगे 1280.6, R2 बाहर लिए यहां से R2 1280.6, म्यू इज 0.2 एंड cos 30 इज √3/2 प्लस R2 ऑलरेडी हैव टेकन आउट, sin थीटा इज हाफ, sin 30 इज हाफ, तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली क्योंकि टाइम सेव करना है मुझे, तो √3/2 इंटू 0.2 प्लस 0.5 इंटू 80.6, ये आ रहा है 862 न्यूटन इज द आंसर। 862 ऑप्शन में है सर? आई डोंट थिंक सो, नहीं तो गए हम काम में से। ओ गॉड, हाय रे बाबा, खुश हो गए हम। 862, ओके सर, ओके सर, सब लोग बोलो एक बार, कमेंट करना क्लास, मतलब कैसा लगा सेशन क्लास के बाद। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है सर, देखो एक बार, इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे। हाँ देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिकल कॉलम्स ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अच्छा, sustains the highest load without buckling? There are 4 situations given. Okay, cantilever with length L, cross section D. The diameter is D and the length is L. दिख रहा है सर आप? Can you see? Yes. This is A. This is A. And it is a column, so therefore there will be compressive load. I don't know what is the load. Load नहीं लिखेंगे, वो कैलकुलेट करना है सर, ठीक है सर। Next we'll go to option B. Column with hinge at one end, roller at other. देखो, there is a column, hinge at one end, okay, लेकिन length is 2L. Length is 2L and the diameter is D. ठीक है सर। And option C is cantilever with length L, cross section 2D. कैंटिलीवर का मतलब क्या है? 2D है ना रे, थोड़ा डायमीटर बड़ा करेंगे। एंड ऑप्शन डी, सब में कंप्रेसिव लोड है बिकॉज कॉलम है। डी, कॉलम विथ हिंज एट वन एंड, रोलर एट द अदर एंड, लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन डी। यस, ये दिया है सर। एंड ही इज आस्किंग विच वन सस्टेन्स हाइएस्ट लोड विदाउट बकलिंग। ये प्रॉब्लम है सर, which one sustains highest load without buckling? देखो, you know very well, pinned, yeah, this is almost like movement is not restrained, so it is as good as pinned. Even in simply supported beam में क्या करते हैं, एक है hinged और एक pinned है, तो पिन को निकाल के हम रोलर सपोर्ट रखेंगे तो इट इज सिंपली सपोर्टेड, सो पिनिड की तरह ही ट्रीट करेंगे। इन बकलिंग वी कैन ट्रीट दिस एज पिनिड। फॉर पिनिड व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ? देखो एक बार, यू नो द इक्वेशन फॉर बकलिंग लोड एज, ओके, बकलिंग लोड एज पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर। एक बार देखते हैं सर, यहां पे लिखूंगा पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर, वेयर एल ई इज द इफेक्टिव लेंथ. So for fixed and free end, one end is free, other end is fixed, the effective length is 2L. For ये तो पिनिड है, so इसमें effective length 2L हो जाएगा. इसमें fixed end and free, the effective length will be 2L हो जाएगा सर. Okay, fine. इसमें it is pinned L है तो diameter D है, तो इसमें क्या होगा सर? Effective length is same as L, pinned. Okay, now put करना. And एक प्रॉब्लम आ रहा है सर, the moment of inertia I here is pi by 64 d power 4 because diameter is d. So here
the moment of inertia I is pi by 64 d power 4. यहाँ पे what is the moment of inertia? Pi by 64 d power 4, but the diameter is 2d. तो 2d power 4. तो यहाँ पे pi by 64 d power 4 आराम से एक बार देख लेना. तो I can be written as, मेरे प्यारे दोस्तों, इसको I1 लिखेंगे या IA, IB, IC, I4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. तो ये क्या हो रहा है सर? 2 2 4 4 16, ये सब क्या होगा? आई ए इसको आई लिखेंगे, आई बी इसको आई लिखेंगे, आई डी इसको आई लिखेंगे, आई पाई बाई 64. बट ये क्या होगा? 2 पावर 4 पाई बाई 64. तो क्या नाइन दिस एज आई सी इज 16 टाइम्स लिख सकता हूं सर, बिकॉज इट इज 2 पावर 4 2 to 4. यस. अब नाउ यू पुट इट इन दिस, विल कैलकुलेट द हाईएस्ट क्रिटिकल लोड. एक बार देखते हैं सर, विल पुट इट. सो लेट मी इरेज दिस. हाँ जी सर, पुट करो. So in this it will be option A will be pi square EI. I is I. Pi square EI by LE. Pi square EI by L square. L square is 2L का whole square. इधर option B. This is option A. Option B. Pi square EI. I is I by L square. What is L? 2L का whole square. L is okay. इधर option C. Pi square E. I is 16 times I, because diameter is twice, by LE square. LE is 2L का whole square. इधर D. Pi square E. I is I. Pi square E by L square. What is L? L is, yes, correct. अब देखो, can I write option A as, इसको लिखेंगे, ध्यान से सुनो, 1 by 4 times pi square EI by L square, because 2 square is 4. Okay. इसमें option B, pi square EI by 4L square. ऑप्शन सी, पाई स्क्वायर ई आई बाई 2 स्क्वायर इज 4. 4 ये 16 से 4 कट जाएगा, तो यहां पे 4 आएगा बाई एल स्क्वायर. ऑप्शन डी, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर. इधर देखो, एक बार कोएफिशिएंट चेक करना सर. दिस इज 1 by 4, दिस इज 1 by 4, यहां पे भी 1 by 4 है. द कोएफिशिएंट हियर इज 4. सब में पाई स्क्वायर ये कॉमन है, पाई स्क्वायर ये बाई एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ये बाई एल स्क्वायर कॉमन है. कोएफिशिएंट इज 1 by 4, कोएफिशिएंट इज 1 by 4 4, एंड द कोएफिशिएंट हियर इज 1. So which one has the highest? This is the highest. So therefore, option C has the highest carrying load. So therefore, before buckling, it carries a higher load. So option C is the right answer. मित्रों, question number क्या है रे? अरे यार, एक बार देखो question number 11. So 11th one is option C. Next, 11th one option C. एक बार देखता हूं सर. Very good. Next, 12th. Read the question. The figure shows. अच्छा, एक बार फिगर की तरफ जाएंगे सर. Let's go to the figure. Okay. Now, देखो एक बार. It's something like this, sir. There is a link, and on this link there is a slider. So it is simultaneously rotating and sliding. ठीक है सर. Let the velocity of the slider with respect to this be v, and let the angular velocity of this be omega. Okay, this v may change, may not change. If this v is changing, this will have acceleration with respect to this. Very good, because when the velocity is changing. So if v is not changing uniform velocity with respect to this, there is no acceleration. ठीक है, no problem. And along the link, हम बात कर along the link acceleration, not all other accelerations. Next. Now, if omega is changing, so therefore it will have क्या बोलते हैं? There will be angular acceleration when omega is changing. If omega is constant with uniform angular velocity with moves, alpha will be 0, because alpha is dou omega by dou t. अब आइए क्वेश्चन की तरफ सर. Now, the figure shows rod PQ hinged at P, rotating counterclockwise with omega with, देखो एक बार, constant angular speed. When the link is rotating at constant angular speed, when omega is constant at 15 radian per second, what will be alpha? Alpha is equal to rate of change of angular velocity. Here omega is constant, d omega is 0. तो alpha angular acceleration यहाँ पे 0 है सर. ठीक है. Now, the block translates along the slot cut. मतलब the block R is translating in the rod PQ. Okay. At the instant shown, the PR is given, मतलब जो रेडियस है, इधर देखो एक बार. What is PR given? 0.5. एक बार देखते हैं सर. PR, P से लेकर यहां से लेकर R. This distance is given as 0.5, means radius. So जो रोटेट हो रहा है उसका रेडियस दिया है. ठीक है. नेक्स्ट. Now, और क्या दिया है सर?
the velocity, the relative velocity of r with respect to rod is 5 meter per second, means it is sliding at 5 meter per second. Okay, at that instant बोला है, ठीक है. One more thing, the relative acceleration of rod with respect to r with respect to pq is 0. इसका मतलब क्या है सर? I can safely say that the block is r is sliding, so its acceleration is 0, relative velocity is 0. इसका मतलब क्या है? It is moving at a uniform velocity, it is sliding at a uniform velocity. Very good sir. और क्या बोला है? What is the correct magnitude of absolute acceleration of the block? मतलब magnitude पूछा है block का. एक बार देखते हैं क्वेश्चन. मैं बताता हूं what is this question all about. अरे यार, अब कर लेंगे सर. नो विल डू. देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इफ यू सी, look at carefully, this is rotating and sliding. Whenever it is rotating and sliding, I taught in my class very clearly, there are 4 accelerations. One is, if this r is sliding at variable velocity, it will have an acceleration of f. But in this case, he said the acceleration of this r with respect to this link is 0. इसका मतलब this f is 0, the acceleration is 0. Leave it. So actually, in class, I'll not just give equations I derived. मेरा इक्वेशन है along the link, along this, इसका acceleration, r का acceleration होता है, तो इसको रेडियल डायरेक्शन बोलेंगे. It is f minus omega square r. सर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं. Omega square r, as it is rotating, there will be, whenever there is a change in direction, there will be centripetal acceleration, radial acceleration, normal acceleration towards the center. That's what, in the direction of decreasing r, so minus आएगा. तो ये f क्या है सर? When this is sliding with velocity, it may be variable velocity or uniform velocity. अगर uniform velocity है, तो acceleration will be 0. But in this case, it is sliding, there is no acceleration बोला है, therefore ये 0 हो जाएगा. तो ये वाला होगा minus omega square r. Next, in the tangential direction, मैं इसको थीटा बोलूंगा सर. In the tangential direction, when it is rotating like this, इसको tangential direction थीटा बोलेंगे. And there will be r alpha tangential acceleration and there will be Coriolis acceleration. Sir, what is Coriolis acceleration? Whenever there is a simultaneous sliding and rotation, there will be Coriolis acceleration. I have taught very clearly along with its direction. यहाँ पे direction की कोई जरूरी नहीं, because he simply has the magnitude, कोई tension नहीं है. And one more thing, what is alpha in this case? This link is rotating at a constant omega. When omega is constant, no angular acceleration, alpha is 0. When alpha is 0, ये मर जाएगा. So the tangential acceleration is given by 2v omega. So ये एक radial ये acceleration है, एक tangential है, and both are perpendicular. Resultant acceleration of this will be under root of AR square plus A theta square. All these I had explained in class. So therefore AR find out करेंगे. Omega is given sir. What is the value of omega given? 15. एक बार देखो 15. And radius is given as 0.5. Okay. देखो AR calculate करेंगे. Minus omega square means towards the center, minus omega is कितना दिया sir? 15 दिया I think. Into 0.5. Am I right sir? AR is equal to 225 into 0.5 minus 112.5 and A theta, it is 2v omega. ध्यान से सुनो, whenever the Coriolis component of acceleration will come only when two things are there. One is simultaneous, there should be rotation, there should be sliding also, relative sliding and rotation. So if sliding is not there, v will be 0, so Coriolis acceleration will be 0. If there is no rotation, only sliding, omega will be 0. Omega rotation है, तो there should be two values, that is v and omega. It should slide and rotate, then only Coriolis will be there. So therefore A theta. To what is the velocity given sir? I think it is given in the question. It is moving at a velocity of 5 meter per second. Excellent sir. 5. 2v omega. A theta is 2v omega. Already omega is known to me. It is 15. Correct sir? Is it correct? So A theta will be equal to, omega is given as 15. 2v omega 75 150. तो ये होगा सर. So the net acceleration will be under root of minus 112.5 का whole square plus 150 square. तो एक बार देखते हैं सर. तो ये आ रहा है 187.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चेक करते हैं सर ऑप्शन, इसका रिजल्टेंट आई डोंट नो है या नहीं. नहीं है तो मर जाएंगे सर. यस है सर, है. क्यों नहीं रहेगा? रहेगा.
we'll move to the next question. Okay, we'll move to the next question. Okay, good sirs. ये पढ़ो एक बार, फिगर नहीं है सर, फिगर नहीं है, एक बार पढ़ो. I'll show you the figure also, don't worry. Come on, come on, come on, मित्रों. देखते सर, हाँ ये फिगर है सर. एक्चुअली क्या पूछा है सर, एक बार देखो. दिस इज द फिगर गिवन. पूछा क्या है सर? ही आस्क्ड px ty wi. एक सेकंड, एक छोटा सा मैसेज भेजता हूं, एक इंपॉर्टेंट कॉल आया है सर. एक सेकंड, सॉरी, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे. एक सेकंड. चलो हो गया सर. सॉरी 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 फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे रे? हाँ, ये तो रोलर सपोर्ट है. कलर चेंज करेंगे सर प्लीज. ही आज सिंपली ये पिनिड सपोर्ट है. वेन एवर इट इज अ पिनिड सपोर्ट, ओनली मूवमेंट इज नॉट रेस्ट्रेंड बट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट्स आर रेस्ट्रेंड. सो देयर विल बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन हियर. रोलर सपोर्ट है तो ओनली एक रिएक्शन आएगा. तो ये सब पिंस ओपन मत करो सर, बिकॉज आई नीड दिस टीएक्स टी वाई डब्ल्यू, ये चाहिए बस. अब देखते हैं सर. एक सेकंड, मैं कलर चेंज करूंगा सर जी. क्या बोला आपको मैं? कलर कौन सा अच्छा रहता है? एक बार ड्रॉ करके देखेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे. अरे यार, ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? पागल है ये सही नहीं दिखेगा सर. आई थिंक दिस, ये भी सही नहीं दिखेगा शायद. ये ठीक है सर, ये ठीक है. विल मूव विद दिस. देखो देखो एक बार. लेट दिस बी टी वाई. I don't know directions whether I am right or wrong. Let it be Tx. I don't know direction, sir. और ये रोलर सपोर्ट है. ठीक है सर, एक ही होगा. नाउ एक काम करते हैं सर, एक सेकंड. दिस इज 4.8 मीटर, दिस इज 3.6. तो ये कितना होगा सर? अरे यार, दिस इज 4.8, दिस इज 3.6. सो दिस विल बी 4.8 माइनस 3.6 इज 1.2. ठीक है सर. नाउ लेट अस टेक मोमेंट्स अबाउट. मित्रों, यहां पे मोमेंट्स ले लेंगे. सो आई हैव नॉट ओपनड अप ऑल दिस, जस्ट ऐसे रख दिया बिकॉज दीज आर ऑल इंटरनल फोर्सेस, वो तो जीरो हो जाएंगे. सो देयरफॉर यहां पे मोमेंट ले लेना. इफ आई टेक मोमेंट्स हियर, डेफिनेटली द मोमेंट ऑफ दिस, मैं कुछ नहीं आपको फ्री बॉडी डायग्राम कैसे दिखा रहा हूं एक बार देखना सर. इसको कोई ओपन नहीं किया, सिर्फ ये रिएक्ट मतलब सपोर्ट्स हटा दिया. जब सपोर्ट्स हटा दिया तो फ्रेश सरफेस एक्सपोज होगा. तो यहां पे एक वर्टिकल आएगा, हिंज है तो हॉरिजॉन्टल. दैट्स ऑल. एज इट इज उठा के मैं ये सपोर्ट्स, आई हैव जस्ट रिमूव्ड सपोर्ट्स. सो ये आएंगे बस, क्योंकि मैं पूरा ओपन करके व्हाट इज द फोर्स इन दिस, व्हाट इज द फोर्स इन दिस, व्हाट इज द फोर्स इन दिस, ये सब नहीं पूछा है सर. एक्स्ट्रा मत करना. जो ₹2 का काम बोलता है तो वही करना. ठीक है सर, समझ में आएगा. नाउ so let's take moments here. तो क्या होगा सर? If I take moments here, there will be 200 into 3.6 clockwise. There will be W into 4.8 anti-clockwise. तो देखो 2000 into, I'm taking moments here. So moment of these two forces will be 0. 2000 into 3.6, which is clockwise, should be equal to clockwise. So W into 4.8, W into 4.8 anti-clockwise. So क्या होगा सर? ये 3 times, ये 4 times. तो 4 ones, 4 500s. So therefore W is equal to 1500. यहाँ पे तो एक ही फोर्स आएगा, that is in the vertical direction. WY ही होगा, because ये रोलर सपोर्ट है. So only one. WY is 1500. ऑप्शन देखो सर एक बार, है या नहीं है? WY is 1000. गलत. WY is 500. गलत. WY is 1200. गलत. गुड.
खत्म सर, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ऑप्शन डी करेक्ट है सर। तो एग्जाम में व्हेन यू गेट लाइक दिस डोंट डू अदर थिंग्स बिकॉज इट विल सेव योर टाइम। तो सम स्टूडेंट्स सर पेपर वाज वेरी लेंथी, ही आस्क्ड three parameters in one question, tx ty, so you can easily eliminate। so 1000 गलत, 500 गलत। so अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा कर रहा हूं, तब क्या होगा सर? लेट मी मेक लाइक दिस। अगर मैं इसको 1500 बनाता हूं, इफ आई मेक, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ऑप्शन ऑल्सो। तो एग्जाम में ये सब मत करना सर, इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो एग्जाम में इफ वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट्स इट, छोड़ दो, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो देखो, नाउ आई वांट एक्स, तो यू जस्ट टेल मी फॉर द कंप्लीट सिस्टम, एक ही तो एक्सटर्नल फोर्स है, वो भी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन, इज देयर एनी एक्स डायरेक्शन फोर्स? नहीं है सर। तो ये सब इंटरनल फोर्सेस है, सो नेट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो यहां पे ये फोर्स क्या होगा सर? कोई हॉरिजॉन्टल नहीं, डेफिनेटली दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो वर्टिकल। तो क्या करेंगे सर? मैं ऐसा करता हूं, यहां पे मोमेंट ले लो या फिर यहां पे ले लो, कोई डिसीजन नहीं, यहां पे मोमेंट ले लो। तो दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस, तो इसका मोमेंट इस पे जीरो हो जाएगा। दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस, इसका मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। 2000 into 1.2, this is anti-clockwise, should be equal to ty, I'm taking here, so therefore ty into 4.8, it is clockwise, so this is passing, this is should be equal to 2000 into 1.2. excellent sir. So 1.2 once, 1.2 fours, 2000 by 4, so therefore it is 500. So tx is 0, ty is 500 and wy is equal to 1500. तो एक बार ऑप्शन देख लेना। yes, absolutely fine. Option D is correct. Okay, sir. Wonderful students of India. We'll move to the next. आराम से देखो सर। हाँ हाँ, a thin closed shell, whenever it is closed shell and subjected to internal pressure, there will be hoop stress and longitudinal stress. If it is not closed, there will be, if it is subjected to internal pressure, if it is not closed, there will be no longitudinal stress, but there will be only circumferential stress. Okay, now the diameter is given as 300 mm and the thickness is given as 2 mm and it is subjected to uniform internal pressure P. The allowable shear stress, what do you mean by allowable? It is the maximum shear stress and that is 70 megapascal. Okay, based on Tresca theory, what is the maximum safe value of internal pressure P? कर लेंगे सर। इधर देखो सर, इधर देखो मित्रों, इधर देखो सर, ध्यान से सुनो। The maximum principal stress is given by PD by 2T, that is circumferential stress. The minimum principal stress is given by longitudinal stress PD by 4T, and in the radial direction, third direction, it is 0. तो मुझे बताओ सर, सॉरी एक सेकंड, इरेजर कहाँ है रे? इरेजर कहाँ है रे? ये तो सिग्मा 2 है सर, माफ करना। दिस इज सिग्मा 2 एंड दिस इज सिग्मा 3। रेडियल डायरेक्शन में तो 0 है। ओके, बिकॉज फॉर थिन सेक्शंस द रेडियल स्ट्रेस इज नेग्लिजिबल। तो अब बोलो, according to Tresca theory, what is maximum sir? Maximum is equal to maximum of sigma 1, देखो एक बार, sigma 1 minus sigma 2 by 2 and sigma 2 minus sigma 3 by 2, then 1 2 2 3 1 3, sigma 1 minus sigma 3 by 2, this is maximum। देखो एक बार, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 by 2 कितना आएगा? और पीडी बाई 80 आएगा सर। अगर ये डिफरेंस लेके देखेंगे, दिस विल बी पीडी बाई 80। अगर ये देखेंगे 2 minus 3, दिस विल ऑल्सो बी पीडी बाई 80। एंड ये क्या होगा? 1 minus 3, पीडी बाई 1 minus 3 इज 0, तो पीडी बाई 2t by 2 is pd by 4t। एब्सोल्युटली फाइन। सो मैक्सिमम विल बी PD by 4T. This should be equal to maximum shear stress, but already the maximum shear stress is given as 70. तो आपको पूछा P, तो P into, ध्यान से सुनो, both should be in consistent units। अगर ये mm है तो ये mm, diameter is 300 by 4 times the thickness is 2, that should be equal to 70। तो कितना आ रहा है सर? This will be 70 into 8 by 300। तो ये, हाँ, 70 into 8 by 300, तो ये आ रहा है 1.87
Yeah, yes, it's there. So don't worry. It is there. Okay. Now we'll move to the next question. ये करो. This is a good question, sir. Missed question है sir. I'll do it. Missed question है sir. This is a very good question. फिगर दिया क्या? हाँ दिया ना रे. P Q. अच्छा क्लॉकवाइज में दिया. P Q R S. This is x axis. This is y axis. कोई प्रॉब्लम नहीं सर. P Q R S. चलो back to the question. Read the question. एक बार पढ़ो सर. Come on, come on. Come on, come on, come on. देखिए सर. मित्रों देखो. एप्सिलॉन एक्स इज 500, एप्सिलॉन वाई इज अच्छा एक काम करता हूं सर, इंटू 10 पावर -6 बाद में मल्टीप्लाई करेंगे unnecessarily value ये xy. What do you mean by epsilon xy? We write it as gamma xy because whenever it is xy it will be shear, so whenever it is yy or xx it is normal. Okay, देखो let me do this question मित्रों. epsilon xx और epsilon x is 500. Of course I'll write 10 power -6. मैं नहीं भूलूंगा सर. चलो माइक्रॉन्स लिखेंगे, वो अच्छा रहेगा. माइक्रॉन में 10 power -6. epsilon y is equal to 100, वो भी माइक्रॉन. एंड गामा xy is 0. ये दिया है सर. Which of the following is correct? The percentage change in the एक सेकंड P Q R S. ठीक है सर. This is x axis, this is y axis. Okay, no problem. देखो अगेन विच आर फॉलोइंग इज आर, इसका मतलब दिस इज एमएसक्यू. दिस इज एमएसक्यू. देखते हैं सर. द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर, ये वाला पूछा है सर. ये डायगोनल पूछा है. द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द डायगोनल क्यू एस, ये वाला पूछा है सर. ही इज आस्किंग द स्ट्रेन इन दिस डायगोनल, ये वाला डायगोनल एंड ये वाला डायगोनल. मस्त क्वेश्चन है सर. आराम से मैं बताऊंगा सर. मस्त क्वेश्चन है सर. देखो देखो एक सेकंड. दिस वैल्यू सर गिवन ना, इसको मैं हटा दूंगा सर. I'll remove this. I'll do it sir, don't worry. देखो let us assume this is my reference axis. ये reference है. ठीक है सर. P Q R S. He is asking strain in the diagonal QS. अरे PQ भी करेंगे, ये इस डायगोनल में पूछा है सर. इस डायगोनल में मुझे बताइए इस रेफरेंस से, एक्स एक्सिस के रेफरेंस से, व्हाट इज द एंगल सर? व्हाट इज द एंगल? ऑलवेज वी मेजर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस. तो कितना है सर? डायगोनल विल बी एट 45 डिग्री. एब्सोल्युटली फाइन. तो पुट थीटा इज इक्वल टू 45 एंड यू नो strain in along any plane which is inclined at an angle theta is given by एप्सिलॉन एक्स. मैं भूल गया सर, एक बार याद दिला देना. बाई 2 cos 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा. क्या ये सही है सर? एक बार बताओ. नो इट्स रॉन्ग. नो नो नो, ये दिख ही रहा है, दिख ही रहा है, ये गलत है. मैं बताता हूं सर. एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन एक्स बाई 2 plus epsilon x minus epsilon y by 2 cos 2 theta plus gamma xy by 2 sin 2 theta. ठीक है सर. दिस इज द इक्वेशन. चलो ये तो इक्वेशन सही है ना? epsilon x, yes, this will give me strain on any plane which is inclined at an angle theta. तो थीटा को कितना पुट करेंगे? 45. थीटा को 45 पुट करना, थीटा को 45 पुट करना, तो क्या होगा? 2 into 45 is 90, cos 90 0, तो ये मर जाएगा. एंड ऑलरेडी गामा इज 0, गामा इज 0, देयर इज नो शेयर. गामा इज 0, ये जाएगा, सिर्फ ये आएगा. तो स्ट्रेन इज गिवन बाय एप्सिलॉन एक्स इज 500 माइक्रॉन्स, epsilon y is 100 micron by 2. This will be 300 micron means 10 power minus 6. But he is asking in percentage. Percentage means multiply with 100. तो कितना आएगा सर? It will be 0.03 I think. Yes, the percentage change in the length of the diagonal is 0.03. So this option is correct. So this option is correct. अरे यार, this is correct. But now he is asking strain in another diagonal. आराम से टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना सर. He is asking strain in the other diagonal. Let's try to calculate. एक second please. एक second please.
1 second, please. I'm back. 1 second. Sorry. Chalo. Come back. No. Let's find out. ये इधर रखेंगे सर, गिर जाएगा. Okay. Now, we'll find out strain in another diagonal. This is P, this is Q, this is R, and this is S. He is asking in the diagonal PR. Okay, PR. मुझे बताइए, and you know these two are at what angle, sir? These two are at 45 degree. ये 45 है, ये भी 45 है सर. लेकिन with positive x-axis I measure the angle in the anti-clockwise direction. तो इसका angle कितना होगा? The total is 180. This is 45. तो ये 135 होगा. So you put theta as 135. तो you will get this strain in this diagonal. This diagonal. तो इस diagonal के लिए theta is 40. अरे इस diagonal के लिए theta is 45. एंड इस डायगोनल के लिए क्या होगा सर? ये एंगल, ये तो 45 है, ये एंगल 180 माइनस 45 इज 135. पुट द वैल्यू. सो एक बार देखते हैं सर. इसको मूव करेंगे. सो मेरा इक्वेशन बन जाएगा. स्ट्रेन इन द अदर डायगोनल इज एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा. तो ऑलरेडी गामा इज 0. cos 2 इंटू कितना होगा? 145 आई थिंक. 135 और 145. अरे यार 45 मतलब 135. आई एम सॉरी 135. तो cos 270 आई थिंक 0. cos 270 यस इट इज 0. तो ये भी 0 हो जाएगा. सो अगेन इट इज सेम. तो कितना आ रहा है सर? दिस इज गिवन एज 500 and this is given as 100 by 2. Again it is 300, but micron is 10 power minus 6. Again he asked in percentage means 100. So 0.03. So the strain in this diagonal and this diagonal is same, that is 0.03. एक बार देखते हैं सर ऑप्शन है या नहीं. एक बार देखते हैं. The percentage change in the length PR, this is also correct. अब last, the change in the angle between PR and QS. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर. The change in the angle between क्या बोलते हैं PR and QS. मैं बताता हूं सर, एक सेकंड. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. एक सेकंड देखो. ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है. तो दिस इज वन, दिस इज अनदर. ओके. व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू सर? ये दोनों में एंगल क्या है सर? 90 डिग्री. ठीक है सर. तो लेट अस फाइंड आउट द स्ट्रेन इन दिस. तो इसके रेस्पेक्ट से ये क्या चेंज हो रहा है एक बार देखेंगे सर. एंड यू नो व्हाट इज द एंगल इसमें व्हाट इज दिस एंगल सर? आई थिंक इट इज 45 डिग्री. करेक्ट. ये 45 डिग्री है. एक बार देखते हैं. यू नो द स्ट्रेन ऑन एनी लाइन और द सेगमेंट विच इज एट एन एंगल थीटा इज गिवन बाय. एक बार मैं बताता हूं ये इक्वेशन क्या ये सही है या गलत है. एक बार देखो. ये इक्वेशन है सर, बिल्कुल ये सही है सर. दिस इफ यू वांट स्ट्रेन एट एनी एंगल थीटा, ये शेयर स्ट्रेन है सर, शेयर स्ट्रेन. सो दिस द ऑलरेडी गामा एक्स वाई इज 0. ये तो गामा एक्स वाई 0 है. तो क्या करेंगे सर? गामा एक्स डैश वाई डैश बाई 2 इस पे पूछा है सर. सो व्हाट इज दिस स्ट्रेन? ये इक्वेशंस याद रख लो सर आप. ई एक्स इज 500 एंड ई वाई इज 100 बाई 2 साइन ऑफ 2 इंटू थीटा इज 45. सो शेयर स्ट्रेन पूछा है सर. वो शेयर स्ट्रेन पूछा है सर. या शेयर स्ट्रेन. तो शेयर स्ट्रेन का इक्वेशन है. इससे पहले नॉर्मल स्ट्रेन, चेंज इन द लेंथ बोला है. लेंथ इज नॉर्मल. ये शेयर पूछा है. दिस इज द इक्वेशन फॉर शेयर. तो कितना आ रहा है सर? गामा एक्स डैश वाई डैश बाई 2. तो कितना आ रहा है सर ये? तो 400 बाई 2, ये 400 बाई 2 इज 200 साइन 90 माइनस 200. तो कितना आ रहा है सर ये? 400. आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एज 400. बिल्कुल 400. बट ये माइक्रोन में है सर. तो गामा एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 400. सो बट माइक्रोन मीन्स 10 पावर माइनस 6. सो मैग्नीट्यूड इज 4 इंटू 10 पावर माइनस 4. 4 इंटू शेयर का मतलब सपोज यू नो पॉजिटिव आ रहा है तो देर इज अ रिडक्शन इन द एंगल. नेगेटिव आ रहा है तो देर इज एन इंक्रीज इन एंगल. दैट इट इज मेंशनिंग दैट ही इज आस्किंग मैग्नीट्यूड. तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 4. ऑप्शन है या नहीं है देखो सर. एक बार ऑप्शन है या नहीं. यस देखो एक बार.
It is 4 into 10, it's not 2, it is 4. So ये भी सही है सर, ये भी सही है सर. He is asking change in the angle का मतलब shear strain पूछा है सर. Change in the angle means he is asking shear strain. Change, अरे पेन ही नहीं लिख रहा. Change in the angle means shear strain. तो A, B, D all are correct. A, B, D. Okay. Now we'll move to the next question. Change in the angle का मतलब shear strain. ये पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है सर ये. This is a good question. Come on, come on. बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. इसको हम सिंपल वे में करेंगे. एक बार फिगर भी देख लेना सर. यू जस्ट सी द फिगर ऑल्सो. अच्छा, ओके. I'll do it in a simple way करेंगे. The figure shows the stress distribution across the section of a क्या बोलते internal surface of a rectangular beam. The height of the beam is given as 30 and the depth or width is, this height is given as 30 and the width or the depth is 10 mm. All are in mm. The shear stress distribution is given by 200y plus 500. 200y, एक second, 200y plus 500, 200y plus 500. All are in Newton per mm square. एक बार देखता हूं सर. I'll explain everything. Don't worry, don't worry. Okay, where y is in mm. Y is measured from the centroidal axis. Assume that there is no variation in the stress distribution along z direction. Okay, which of the following is true? The net force in the x direction, the net force in the x direction. Okay, the moment about the z axis. ठीक है सर, मैं बताता हूं. And the dimensions are 30 and 10. This total length is 30 and this is 10. ठीक है सर. अब देखो, हाँ आराम से देखो, कॉमन सेंस देखो सर. अगर इसमें पक्का मुझे दिख रहा है देयर इज एन एक्शियल फोर्स, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिविएशन. अगर कोई एक्शियल फोर्स नहीं है, अगर एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इफ देयर इज नो एक्शियल फोर्स, इफ देयर इज ओनली ट्रांसवर्स लोड और बेंडिंग मोमेंट, तो आपको कुछ ऐसा आता है सर. देखो एक बार, you will get something like this. Definitely you will get something like this. So therefore net force will be zero. Why? Because this is positive, ये पूरा positive, ये पूरा negative है, तो net force will be zero whenever there is no actual force. यहां पे तो actual, क्योंकि एक बार बताओ, सुनो क्या, m by I is equal to sigma by y और sigma is equal to m by I into y. तो you know very well किसी एक सेक्शन पे मोमेंट तो कांस्टेंट है एंड किसी एक सेक्शन पे आई भी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है. सो बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय ky. तो यहां पे ky आया है प्लस एडिशनल आया है, मींस व्हाट एवर दिस एडिशनल इज कमिंग, इट इज एक्शियल फोर्स. What I repeat sirs, देखो एक बार, m by I is equal to sigma by y. At any particular section the bending moment is constant. उस सेक्शन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कांस्टेंट, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे ये वाला कांस्टेंट है, तो सिग्मा इज इक्वल टू के वाई. मुझे के वाई आना चाहिए सर, बट एडिशनल आ रहा है, का मतलब अपार्ट फ्रॉम बेंडिंग से जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, एक्चुअल स्ट्रेसेस, so there is some axial force also that will give me the net axial force, because net force due to net force पूछा सर, ड्यू टू बेंडिंग विल बी जीरो, बिकॉज ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स आर सेम. तो इस पे जो फोर्स आ रहा है, इस पे जो फोर्स आ रहा है, ये टेंसाइल आएगा, ये कंप्रेसिव आएगा, नेट विल बी जीरो. बट हियर नेट इज नॉट जीरो बिकॉज देयर इज एडिशनल. तो ये ऊपर और नीचे अगर सिर्फ यही रहता है, इट विल बी जीरो. इसका मतलब whatever this is coming, it is the axial stress. मतलब जो एक्चुअली सेंट्रोइडल एक्सिस पे डाल के खींच रहा है वो आ रहा है, तो क्या होगा सर? सो द एक्शियल फोर्स विल बी, इसके कारण नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज इसके कारण ऊपर वाला नीचे वाला सिमेट्रिक है, ऊपर वाला टेंसाइल, नीचे वाला कंप्रेसिव, नेट फोर्स विल बी जीरो. बट ये बच रहा है because of that there is a axial force. कितना आएगा सर? and the area is 30 into 10. so therefore stress into area, stress is 500 and the area is 30 into 10. एक बार देखो, stress is 500 Newton per mm square. This will be Newton per mm square. This is mm, this is mm, तो mm square. So ये होगा Newton. तो कितना आएगा? 5 3 is 15. 5 3 is 15 0 into 10 power 3 Newton. So 150 kilonewton is the net axial force. So समझ में आ रहा है सर? ये बहुत सिंपल वे में कर रहा हूं सर. अदरवाइज यू टेक अ स्मॉल एलिमेंट, इंटीग्रेट एंड कैलकुलेट द नेट फोर्स.
दैट विल बी वेरी लेंथी मेथड। ये तो कॉमन सेंस बताता है। तो ये तो बेंडिंग का है। नेट फोर्स, नेट एक्शन फोर्स ड्यू टू बेंडिंग विल बी जीरो, there will be transverse force, so net axial force will be zero, whatever is left that is the net axial force, so therefore the net axial force is 150 kilonewton। कहां गए रे? the net force in the x direction is 150, option A is correct, net force option A is correct। अरे यार ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये गलत है सर, नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन ये। अब पूछ रहा है नेट मूवमेंट, आराम से देखो कितना सिंपल वे में करेंगे सर। नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट, हाउ टू कैलकुलेट नेट मूवमेंट, याद रखना मूवमेंट किसके कारण आ रहा है? एक्शियल फोर्स के कारण नहीं आ रहा है सर। मूवमेंट इज कमिंग ओनली ड्यू टू 200 वाई, मूवमेंट इज कमिंग ओनली ड्यू टू 200 वाई मेरे प्यारे दोस्तों, मूवमेंट इज कमिंग ओनली ड्यू टू 200 वाई। इधर देखो मैं लिखता हूं इसको, देखो एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। वेरी गुड। तो आप देखना सिग्मा इज बेंडिंग स्ट्रेस। अब देखो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज द बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय 200 वाई प्लस 500। ये तो एक्शन है, इट डजंट लीड टू एनी बेंडिंग। ये तो एक्शन डायरेक्शन है, कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं का, सिर्फ यही बेंडिंग मूवमेंट। ये स्ट्रेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग, दैट्स इट। तो यहां पे व्हाट इज सिग्मा बाय वाई सर? सिग्मा बाय वाई इज 200, दो m is the moment, I, what is I? So the depth is given as 30, this is given as 10, so what is the moment of inertia? B 30 into d cube by 12 is equal to sigma by y which is 200। लेकिन यहां पे क्या होगा सर? सिग्मा इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो एक बार यूनिट्स चेक करेंगे तो ये आई थिंक ऑल आर इन mm, तो न्यूटन mm में आएगा सर। देखते हैं सर, न्यूटन mm में आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय 200 इंटू 10 इंटू 30 क्यूब बाय 12। तो ये आ रहा है 45 1 2 3 4 5 न्यूटन mm, बिकॉज डायमेंशन आर इन mm। तो न्यूटन मीटर में चाहिए तो 3 जीरोस काट देना, तो 4500 न्यूटन मीटर इज द बेंडिंग मोमेंट। अच्छा क्वेश्चन है सर, 4500 बेंडिंग मोमेंट। एक सेकंड, सिंपल वे में किया सर। यस, ए एंड सी आर करेक्ट। अरे यार ए एंड सी एक बार देखते हैं सर, ए एंड सी मित्रों 16 ए एंड सी इज करेक्ट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर, मस्त क्वेश्चन था ये। सिर्फ बेंडिंग का जो काम में है वही ले लेना, एक्चुअल मत ले लेना सर। ओके, राइट राइट राइट। नेक्स्ट, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सर पढ़ मित्रों? चल एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं सर। ये तो हो गया सर, दिस क्वेश्चन इज ओवर। ए वर्टिकल कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड and subjected to compressive load at the free end, and subjected to at the free end मतलब cantilever type। okay, the column's cross section EI is given, the fractional rigidity, लेकिन यूनिट देखो एक बार, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो लेंथ के डायमेंशन हम मीटर में ले लेंगे बिकॉज इट इज गिवन। द क्रॉस सेक्शनल, अच्छा एरिया इज ऑल्सो गिवन, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी मीटर स्क्वायर में दिया है सर, 7.85 इंटू 10 पावर -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी दिया है। एंड द यील्ड स्ट्रेस, अच्छा द यील्ड स्ट्रेस इज गिवन एज 145, मपा का मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, मेगा पास्कल इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। इफ द कॉलम फेल्स आइदर बाय बकलिंग और बाय, एक्चुअली ट्रेस्का का मतलब यहां पे क्रशिंग, बकलिंग और क्रशिंग। ओके, द मैक्सिमम लोड दैट इट कैन टेक इन किलो न्यूटन। अच्छा एक सेकंड सर, देखो सर, you know very well when one end is fixed and other end is free, what is the effective length sir? The effective length is 12 when one end is fixed other end is free। लेकिन लेंथ दिया नहीं दिया सर, कहीं पे हम लेंथ का जिक्र नहीं किए। सो इज द लेंथ गिवन, कॉलम का लेंथ, लेंथ ऑफ द कॉलम इज 2 मीटर। अच्छा 2 मीटर दे रखा है सर, सो हम नहीं लिए तो हम पागल है सर, 2 मीटर ठीक है सर। तो ये सब आपको काम में आएगा सर, गेट और इसमें। ओके नाउ कैसे करेंगे? तो द यूलर्स बकलिंग लोड इज गिवन बाय
पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर ई आई इज ऑलरेडी गिवन 9.82 into 10 power 5 pi square ei by le. What is the effective length? 2 length, 2 into l. L is how much, sir? L is given as 2, 2l का होल स्क्वायर। एक बार मैं कैलकुलेट करता हूं सर, फटाफट कैलकुलेट करेंगे रे फटाफट। 9.82 into by 16, ये आ रहा है 605,747 न्यूटन और 605.747 किलो न्यूटन। दिस इज द लोड सर, 605.747 किलो न्यूटन। लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। जो मिनिमम है वो लेना, जो मिनिमम है दैट विल बी फर्स्ट। देखो, वन सेज, ध्यान से सुनो, वन सेज इट विल फेल एट 100 न्यूटन, अदर सेज इट फेल्स एट 400 न्यूटन। मतलब आप 1000 ले तो 400 पे फेल हो ही जाएगा, तो मिनिमम लेना है सर। चलो क्रशिंग लोड ले लेंगे सर, दैट इज सिग्मा यील्ड इनटू एरिया। क्रशिंग लोड, द क्रशिंग स्ट्रेस इज यील्ड और क्रशिंग स्ट्रेस इज कितना है सर, कहां पे दिया है? 145। तो 145 ये तो मेगा में है, मेगा मींस 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा पास्कल इज, मेगा इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया। व्हाट इज द एरिया सर? 7.85 into 10 raised to minus 3, so many Newton. फटाफट फटाफट फटाफट, 145 into 7.85, तो ये आ रहा है 1138.25 into 10 power 3 न्यूटन और 1138.25 किलो न्यूटन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ, देखो एक बार, तो ये बोल रहा 1100 किलो न्यूटन पे फेल होगा, बट ऑलरेडी यूलर से 605 से फेल हो जाएगा सर। So therefore, the maximum load that you can carry is 605, because इसको क्रॉस करेंगे तो वो बकल होके फेल हो जाएगा। What to talk about then? So the answer is the maximum load that it can take is 605.1 decimal बोला है, तो 7 ले लेंगे सर, 7 किलो न्यूटन। इसका आंसर है 605। वेरी गुड, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है सर। A simply supported beam with a point load P at a distance L by 3 from the left is shown. The elastic strain energy of the beam is given by, अच्छा strain energy दे रखा है, ओके, कुछ वैल्यू दिया है, ओके, and EI is given, the length is also given, the deflection at the loading point। सेव होगा सर, मैं तो डर गया था इस क्वेश्चन को, बिकॉज स्ट्रेन एनर्जी दिया है, तो लकीली ही हैज आस्क्ड एट द लोडिंग पॉइंट, सेव होगा सर। अगर लोडिंग पॉइंट पे नहीं देता तो यू शुड टेक वर्चुअल लोड, ये सब काम रहता है सर, लकीली दिया है। तो व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी गिवन सर, एक बार लिख लेते हैं। द स्ट्रेन एनर्जी गिवन इज 2/243 पी स्क्वायर एल क्यूब बाई ई आई। ठीक है सर, ओके। तो ही इज आस्किंग लेंथ कितना दिया सर, एक बार मैं वैल्यूज पूरा लिख लेता हूं। ई आई का वैल्यू दिया है 16.66 into 10, again be careful sir, all length dimensions are given in meter, length is 1 meter। और कुछ दिया सर, डिफ्लेक्शन पूछा है, दैट्स इट, आराम से कर लेंगे सर, विल डू इट। देखो मेरे प्यारे दोस्त, इधर देखना, यू नो Castigliano's one of the theorems says that if you want the deflection under the point load, differentiate the total strain energy partially with respect to load wherever you want the deflection, वहां पे जो पॉइंट लोड है उस पॉइंट लोड के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना, दैट विल गिव मी द डिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल है सर। सो द डिफ्लेक्शन वो उसी पॉइंट पे पूछा है जहां पे लोड है, तो डायरेक्टली पार्शियली डिफरेंशिएट विद पी। तो इट विल बी 2/243, डिफरेंशिएशन ऑफ पी स्क्वायर इज 2p, एल क्यूब तो एज इट इज है बाई ई आई। सो देयरफॉर द डिफ्लेक्शन इज गिवन बाई 4/243, 2 into 2 is 4/243। p दिया है क्या सर, P दिया है 150 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन। 2 into 2 is 4, 2 into 2 is 4/243, P is 150 किलो मतलब 10 power 3। द लेंथ इज गिवन एज 1, तो सारे मीटर में ही ले लेंगे। EI is given as 16.66 into 10 power 5, तो as all are taken in meter, the answer will be in meter। एक बार फटाफट कर लेंगे, 4 into 150 into, ये आ रहा है
1.48 into 10 power minus 3 meter or 1.48 mm. Is it asked in mm or centimeter? एक बार देखते हैं सर. mm. So mm will be 1.48. The answer will be 1.48 is the final answer to this question 18. अभी 4 questions बचे हैं सर. Only 4. Let's do it. ये करो. Do this question. Must question है सर. I love this question. Make it fast. A simply supported beam has a circular cross section, ठीक है, with a diameter 20 and the area 314.2. The area moment, एक बार values पूरा लिख लेंगे क्या सर? Okay. यहाँ पे there is an axial load also. Oh my god. Unlike like the previous question, इससे पहले जो था तो 200 by plus 500 something like that. Okay. चलो कर लेंगे सर. Now what is he asking? देखो देखो एक सेकंड क्वेश्चन को देखो. पूरा मूव है. अरे यार पता नहीं यार ये कहां गया. क्वेश्चन ही गायब हो गया सर. वो अंडू नहीं हो सकता क्या? क्वेश्चन ही गायब है बिकॉज दैट वाज द बेस्ट क्वेश्चन यू नो. अब मेरे पास लिखे सो भी नहीं. एक बार मैं देख लेता हूं. पता नहीं यार गायब हो गया. बट कैन आई इंपोर्ट द फाइल? एक बार मैं देख लेता हूं सर. इफ आई कैन इंपोर्ट द फाइल. मोर insert PDF. Let me check if I can import. Let me check. Yes. Question number. Yes, this one. देखो एक बार read the question. A simply supported beam has a cross section with a diameter 20, and the area is given. The moment of inertia is given, length is given, a point load is acting at the center, and an axial load. Apart from transverse load, there is axial load also. Okay. The magnitude of the offset between neutral axis and there is a, देखो, whenever there is no axial load, the neutral axis and centroidal axis, they coincide. But यहाँ पे there is an axial load. Therefore, it will not, like previous question also, the neutral axis पे नहीं था, so offset था. He is asking, what is the offset? कहाँ पे? Where the magnitude of the offset between neutral axis and the centroidal axis at L by 2 means he is asking the offset at L by 2 का मतलब center. मैं बताता हूं sir, what is this question all about? पहले we'll take the values. First we'll take the values. चलो कोई बात नहीं. First we'll do this. Can you please draw the bending moment diagram, sir? You know he is asking at the center. So at the center, what is the bending moment? You know the bending moment at the center is given by WL by 4. यहाँ पे P दिया है. You know, so the bending moment diagram for a simply supported beam with a point load is given by this. Okay, it is if the load is P, it will be PL by 4. Let's calculate what is the bending moment, sir. Bending moment is PL by 4. What is P? एक बार देखते हैं sir. The load P is given as 100 Newton. The load P is given as 100 Newton. And the length L, what is the length given, sir? The length is given as 4 meter. 4 meter. So 4 meter. 4. PL by 4. So this will be, एक second, this is in meter. So this PL, this is in Newton. So therefore the bending moment is given by 100 Newton meter. Am I right, sir? The load is at the center. He is asking at the center. So okay. Everything is asked at the center. So therefore, एक बार देखता हूं sir. P is 100 Newton. 100 Newton or 100 kilonewton? ठीक है 100 Newton ही ले लेंगे. जो भी है, we'll take.
100 न्यूटन है, ठीक है। लेकिन आप बताओ सर, मेरे प्यारे सज्जनों, आप बताओ, इज इट अ हॉगिंग मूवमेंट और आई मीन पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट और सैगिंग, सैगिंग और हॉगिंग? मुझे लग रहा है ये हॉगिंग लग रहा है सर। देखो अगर लोड ऐसा है, देखो कहां गया, कहां गया रो, लोड ऐसा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं सर, कहां गया, तो डेटा करेक्ट है, एक बार देख ले तो, हाँ, ओके, सो इट इज 100 दिया है सर, 100 बेंडिंग मोमेंट इज 100, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ लेकिन ये है, इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करेंगे, 100 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन एमएम, एक्सलेंट सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ क्या बोल रहा है सर, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, ठीक है सर, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, ठीक है सर। अब देखो, नाउ व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस, इट विल बी एम वाई बाई आई, यस सर, करेक्ट ना, इट विल बी एम वाई बाई आई, तो एम इज 100 इंटू 10 पावर 3 वाई बाई आई, व्हाट इज आई, इज इट गिवन, एक सेकंड, आई कहां दिया, 7854 mm पावर 4, 7854 mm पावर 4, एक सेकंड, 7854 mm पावर 4, एक बार यूनिट चेक कर लेंगे, ऑलरेडी दिस बेंडिंग मोमेंट इज न्यूटन एमएम, करेक्ट, न्यूटन एमएम, दिस इज न्यूटन एमएम, वाई इज इन एमएम and this is mm पावर 4, so you will get this as Newton per mm square which is megapascal। तो बेंडिंग स्ट्रेस बताओ कितना है सर, 100 इंटू 1000, 7854, ये आ रहा है 12.73 बाई मेगा पास्कल, दिस इज ओनली बेंडिंग स्ट्रेस, 12.53, यस, एक्सलेंट सर। देखो एक बार ध्यान से सुनो, और एक बार, देर इज एक्चुअल स्ट्रेस ऑल्सो, देर इज एक्चुअल स्ट्रेस ऑल्सो, बताओ एक्चुअल स्ट्रेस क्या है, देखो, देर इज एक्चुअल लोड, उसके कारण भी आ रहा है सर, एक्चुअल लोड के कारण आ रहा है सर, देखो, व्हाट इज द एक्चुअल लोड, to 20 kilonewton. So therefore, the stress, direct stress due to the 20 kilonewton load is 20 into 10 पावर 3 Newton by area. और because ये डायरेक्टली इस सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रहा है, तो थ्रू आउट दिस एरिया यूनिफॉर्मली इट विल एक्ट, देयर विल बी यूनिफॉर्म टेंसाइल लोड, ये यूनिफॉर्म टेंसाइल लोड, तो कितना होगा सर, तो एरिया इज 7854 mm square. No. Area is 314. I'm sorry, sir. That is moment of inertia. I'm really sorry. Sigma by area. What is the area, sir? What is the area? Area कितना आ रहा है, sir? Area is given as 314.2. Let me repeat, sir. Let me repeat. Because of यार जो whatever the bending stress in terms of y we got it is, देखो जो भी है m by a is equal to sigma y at the centroidal section, it is due to bending, it is due to bending, ठीक है सर, and ये actual है सर, ये actual कितना है एक बार बताओ, तो ये आ रहा है डायरेक्टली देयर इज अ लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन बाय 20 किलोन्यूटन 20 into 10 power 3 बाय एरिया, व्हाट इज दैट एरिया, 314.2, करेक्ट है, एक बार देखो 20123 डिवाइडेड बाय 314.2 एंड ये आ रहा है 65 मेगा पास्कल, but this is tensile, sir. Why tensile? Because directly there is an axial load, directly there is an axial load, so ये tensile है सर, ये प्लस होगा। अब देखो हम दोनों सुपर इंपोज करेंगे सर, विल सुपर इंपोज बोथ एट द सेंट्रोइडल एक्सिस, ये तो एवरीवेयर इट विल बी सेम। अब देखो मित्रों, एक बार देखो, एक बार बेंडिंग स्ट्रेस देखना, and direct stress, this is the bending stress, एक second, this is the bending stress and the direct stress is given by, the direct stress अभी तो देखिए 63.65 मेगापास्कल। अब सुनो ध्यान से सर, नाउ अब I'll explain, he is asking where from, देखो एक सेकंड, I'll show you very clearly, if you superimpose both, the depth is, कितना डेप्थ है रे, एक सेकंड, it is I'll show you very clearly, the diameter is 20, circular section, the diameter is 20, देखो the diameter is 20 और ये centroidal axis,
देखो एक सेकंड, एंड यू नो इफ यू सी द फिगर नीटली, एक बार देखो टॉप फाइबर क्या होगा सर? So it is like this. So the top fiber will be in compression and the bottom will be in tension. Because अगर लोड, अरे यार एक सेकंड देखो, simply supported, तो ये ऐसा हो रहा है सर, इट्स समथिंग लाइक दिस. सो द टॉप इज इन कंप्रेशन, बॉटम इज इन टेंशन. सो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले इन कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले, दिस इज ड्यू टू बेंडिंग. ओके राइट. सो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले टेंशन. यस. एंड ये बेंडिंग स्ट्रेस होगा. देर इज अ डायरेक्ट स्ट्रेस as it is passing through the central axis, the direct stress will be uniform. This is 63.65. अब बताओ, मुझे बताइए, where will be the stress zero? कॉमन सेंस बताता है, देखो ये तो टेंजाइल है सर, ये तो टेंजाइल है. दिस इज डायरेक्ट स्ट्रेस इज टेंजाइल, डायरेक्ट स्ट्रेस इज टेंजाइल, तो ये पूरा टेंजाइल है सर. तो क्या न्यूट्रल एक्सिस से जीरो, न्यूट्रल एक्सिस से जीरो क्या टेंजाइल हो, क्या जीरो हो सकता है सर? दिस इज टेंजाइल, दिस इज टेंजाइल, हो ही नहीं सकता. तो समवेयर यहां पे, आई डोंट नो वेयर, बट एट ए डिस्टेंस वाई समवेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज एक टेंशन है, ये कंप्रेशन है, एक टेंशन है, कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन इज नेगेटिव. तो -12.73y प्लस 63 पॉइंट. ध्यान से सुनो, कहां पे जीरो हो सकता है सर? मित्रों एक बार मैं नीटली बताता हूं सर, डोंट वरी. देखो, लेट अस सुपर इंपोज बोथ. इफ आई सुपर इंपोज बोथ, दिस इज 12, ये कंप्रेशन है और ये टेंशन है. अगर मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो जाएगा, नेट विल बी जीरो. अगर इसको उठा के इसको सुपर इंपोज करेंगे, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 12.73y एट ए डिस्टेंस y, ये तो न्यूट्रल एक्सिस है सर, ये तो न्यूट्रल एक्सिस. ओके, नाउ लुक एट, नो, दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस. आराम से, टेंशन मत लेना सर, एक सेकंड. Because पूरे बेंडिंग में if there is no axial force, the neutral axis and centroidal axis will be coinciding. Yes, यहां पे अगर मान लो ये नहीं है, देखो कहां पे, सो बेंडिंग में क्या है सर? न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस क्या होना चाहिए? न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेस जीरो. कहां पे जीरो होगा? ये तो सेंट्रोइडल एक्सिस है. ओके, अब ऑफसेट हो गया सर, देखो. एंड दिस वैल्यू नेगेटिव कंप्रेशन, एंड दिस अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वहां पे स्ट्रेस जीरो हो जाएगा सर. तो वो ये डिस्टेंस पूछा है सर. एक बार देखो, ये दिस इज 12.73y, this is compression. When this compression magnitude is equal to this magnitude 63.65, the stress will be zero. So therefore he is asking the value of y. तो कितना होगा सर? Divided by 12.73. तो ये आ रहा है यार 63.65 divided by 12.73. तो ये आ रहा है आपका आंसर 5 mm. इसका मतलब फ्रॉम दिस एक्सिस at a distance of pi, the stress will be zero. He is asking that offset. तो अच्छा क्वेश्चन था सर. The answer is 5 mm. The answer is 5 mm. Is it okay? चलो, we'll move. The answer is 5. I think it is MSQ. Sorry. Fill in the blank. I'm really sorry. माफी चाहता हूं. So it is the fill in the blank. He is asking the magnitude of offset between neutral axis and the centroidal axis. आप जानते हैं सर मेरे प्यारे दोस्तों, neutral axis is what? Where the stress is zero. तो इस पॉइंट पे स्ट्रेस इज जीरो. इस पॉइंट पे ये दोनों, तो दिस इज न्यूट्रल एक्सिस एंड सेंट्रोइडल एक्सिस. दिस ये ऑफसेट पूछा है दोनों के बीच में. इफ देयर इज नो एक्सियल लोड, द न्यूट्रल एक्सिस एंड सेंट्रोइडल एक्सिस कोइंसाइड होता है प्योर बेंडिंग में. ओके, बट यहां पे एक्सियल लोड है, तो दिस वैल्यू इज 5. मस्त क्वेश्चन था सर. आंसर इज 5. विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर. देखो एक बार, लास्ट 3 क्वेश्चंस. क्या बोला है सर? देयर इज अ कैंटिलीवर बीम. Can I calculate the stiffness of this? He is modeling this. What is the natural frequency? बहुत simple है sir. The natural frequency is equal to omega is 2 pi f. So natural frequency is 1 by 2 pi omega. And you know, omega can be written as root k by m. ठीक है sir. K is what? Stiffness of this. How to find out stiffness? ये तो cantilever with a point load है. तो you know cantilever with a point load के लिए deflection क्या होता है sir? PL cube by 3EI, where P is equal to mg. देखो P is equal to mg. ये load P is mg. P को mg. Okay. तो what will be the stiffness? It is load by deflection. P by delta. तो what is P by delta, sir? Load per unit deflection is stiffness. What is P by delta? 3EI by L cube. That is the value of K. तो K आ गया sir m. तो क्या होगा? So the frequency is given by मित्रों, the frequency, simple question है sir, direct.
So the frequency is, because he's asking in hertz. So 1 by 2 pi root k, already k is known. What is k? 3 ei by l cube by m. Very good, sir. तो पुट करना सर, all values you put. एक बार देखते हैं. F will be equal to 1 by 2 pi under root of 3, सारे मीटर में अपने एसआई यूनिट्स में रख देना सर, नॉट इन एमएम, कंफ्यूज हो जाएंगे आप. सो देयरफॉर EI is the value of EI given? E नहीं दिया सर. E is given as 200, so it will be 200. giga का मतलब 10 power 9. Pascal is Newton per meter square. All Newton meter. That's it. I. What is I? The moment of inertia. The diameter is given as 20, so it will be pi 64. T is 0.02 power 4. EI. ये पूरा रूट है सर. EI by length. What is the length given, sir? Somewhere the length is given. Somewhere the length 1 meter. Very good. So somewhere the length is given. So 1 cube. And the mass is also given. What is the mass, sir? The mass is given as 10 kg. Yes. Mass is given as 10 kg. 10. इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं. तो F will be equal to 1 by 2 pi root of 3 into E is 200 giga means 10 power 9 into I is pi by 64 d power 4, okay, divided by L cube. Length is 1 cube and mass is 10. एक बार मैं कैलकुलेट करता हूं सर. Let me calculate. 3 into 200 into 1 exponent 9 into ये 21.7 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.45. 3.45 hertz. This is coming out to be 3.45 hertz. एक बार आंसर. Yes, correct. No problem at all. Last two questions, sir. ये करो. Must question है sir. This is basic mechanics. An electric motor is spinning at 1500 rpm. Must question है sir. Basics check कर रहा सर. Where the load power are cut off. Run हो रहा था, cut कर दिए. The rotor has a mass of 50 kg and the radius of gyration is 0.2 meter. अरे यार 200 mm is 0.2 meter. Then goes down to rest. Finally it is coming to rest. Due to kinetic energy, constant torque of 10 Newton meter acts on the rotor as it goes down. The number of क्या हो रहा है actually, there is a rotor rotating at 1500 rpm. तो it is cut off. Cut off करने के बाद एक constant torque 10 Newton meter is acting. ठीक है. तो he says once it is cut off, how many revolutions will it make before coming to rest? Number of revolutions पूछा है सर, and those revolutions should be in integer. करेंगे सर, अच्छा क्वेश्चन है. तो you know that like F is equal to ma Newton's second law for linear motion. For rotation we have net external torque is equal to I alpha. So torque is I is यहाँ पे mk square. ये तो जानते हैं आप, mass into radius of gyration का whole square. ठीक है सर. I taught everything, मतलब physical significance of radius of gyration, all this. तो सर न्यूटन मीटर में रख देना. Torque is 10, mass is given as 50, the radius of gyration is 0.2 square into alpha. यहां से आपको alpha मिल जाएगा so many radian per second square. So 10 by 50 by 0.2 by 0.2 and alpha is 5 radian per second square. Is it a positive value or negative value, sir? It will be negative, sir. Why it is negative? Because initially it was rotating, बाद में वो retired हो रहा है, coming to rest, so it is -5. Okay, ये भी आ गया सर. अब यहां से how can I proceed? ध्यान से सुनो. देखो सर, as the torque is constant, it will retard at a uniform angular acceleration. तो कैसे करेंगे सर? I think we know some equations. He is asking number of revolutions. तो कैसे करें सर? मुझे पता है सर, v square minus u square is equal to 2as linear के लिए. So फाइन अगर रोटेशन में कन्वर्ट करना है, why are you applying this equation?
ही इज आस्किंग नंबर ऑफ रोटेशंस, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पूछा है सर. तो इसलिए आई एम रेटिंग दिस इक्वेशन. बट व्हाई ओनली दिस इक्वेशन, व्हाई नॉट v इज इक्वल टू u plus ct, ऑल दोस थिंग्स? बिकॉज यहां पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज नोन, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज नोन, ही इज आस्किंग थीटा, दैट्स व्हाई आई एम रेटिंग. तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी minus initial angular velocity is equal to 2 angular acceleration, and you know linear displacement, yes, angular displacement is yes. Very good sir. What is the final angular acceleration? 0, because it is coming to rest. ये 0 हो गया. तो minus omega naught square is equal to, actually it is alpha is minus sir. So ये भी गया. So therefore theta will be equal to omega naught square by 2 alpha. Excellent sir. Where theta will be in radian, because ये radian square per second square, radian per second, ये radian में आएगा. Your value of theta will be in radian. सर समझ में नहीं आ रहा. Omega is radian per second, square है, तो radian square by second square. Alpha is radian per second square. तो ये second square गया, radian गया, तो answer will be in radian. So omega naught. What is omega naught? Initial angular velocity. What is the initial angular velocity? Dear sir, oh my god, it is given as 1500 rpm. Omega is equal to 2 pi n by 60. So omega naught ये initial value है, तो it will be 2 pi. Initially it is rotating at 1500 rpm by 60. तो कितना आएगा सर? 2 into ये आ रहा है 157.1 रेडियन पर सेकंड. तो यहां पुट करना थीटा विल बी इक्वल टू 157.1 स्क्वायर बाई ट्वाइस. अल्फा इज 5, आई थिंक. अल्फा कितना है? ऑलरेडी माइनस ले चुका हूं, माइनस माइनस कैंसिल है, अब मैग्नीट्यूड चाहिए. अल्फा इज कितना है? 5 दिस स्क्वायर बाई 10. तो ये आ रहा है थीटा विल बी इक्वल टू 2467.4 radian. But he is not asking so many radian, he is asking number of rotation. How can I convert radian to number of rotation? You know my dear students, 180 degree मतलब pi radian और 360 degree का मतलब 2 pi radian. बहुत बढ़िया सर. What, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, what is 360? 1 rotation corresponds to 2 pi radian. एक रोटेशन का मतलब 2 pi radian. इतने रेडियन 2467.4 रेडियन मतलब हाउ मेनी रोटेशन? सो इट विल बी 2467.4 डिवाइडेड बाय 2 पाई रोटेशंस. तो एक बार देखते हैं सर, ये आ रहा है 392.69. इंटीजर में पूछा है तो आई रेट इट एज 393 रोटेशंस or revolutions before it comes to it. So 393 is the right answer. 393 must question tha sir. So basic mechanics. Last question. बहुत अच्छा simple सा question है sir. A bar of length 1 meter is fixed at one end. Before heating, it's free and this gap has 0.1 mm from a rigid wall. Now the bar is heated so that the rise of temperature, matlab the delta T value is, it is heated by 10 degree, matlab 10 degree rise, not heated to. The coefficient of alpha is given as 20 into this. The modulus of elasticity is also given. The material properties do not change. The magnitude of the stress in the bar. बहुत simple है सर. पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? क्या पता अगर इस बार का फ्री एक्सपेंशन 0.1 से कम आता है, 0.1 mm से, then there will not be any stress because it is free to expand. But if the expansion is restricted, then the stress will be developed of what magnitude? Whatever the expansion is prevented, based on that the stress will be developed. ठीक है सर जी, एक बार देखना, एक बार देखो सर, देखो free expansion is free expansion L alpha delta T. What is L sir? What is L? Length is 1 meter. So can I write 1 as, देखो 1 meter as 1000 mm, 1000. And alpha is given sir, एक सेकंड. L is, ये alpha delta का तो कोई यूनिट नहीं होता, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है. कैसा? Delta T is 1 by degree centigrade, alpha delta T is degree centigrade, alpha is 1 by degree centigrade. 1 by degree centigrade cancel. Whatever the unit you have L for, same will be for the free expansion. So I took L as in mm. Alpha is how much? What is alpha? 20 into 10 power minus 6. And it is heated, delta T is 10 degree centigrade. तो कितना आ रहा है सर? 1 2 3 4 5. So I think you are getting this as 0.2 mm.
इसका मतलब first it will expand to 0.1 mm freely because the gap is. So how much expansion is permitted? If there is no this end, it would have expanded freely by 0.2 mm. So first it will expand up to 0.1 freely without any restraint. But remaining 0.1 which you have prevented, so expansion prevented will be equal to 0.2 minus 0.1, this is 0.1 mm. So whatever the stress is developed, so देखो यहां पहुंचने के बाद जो फ्री हो रहा था उसको दबा दे रहा है, ये रिएक्शन डेवलप कर रहा है, मींस जो भी आपका एक्चुअल डिफॉर्मेशन होना चाहिए, द स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड ड्यू टू दिस 0.1 mm. तो वेरी सिंपल सर, आप इक्वेशन लिखना, व्हाट विल बी द actual deformation? The actual deformation is PL by AE. This is the actual deformation. जितना expansion prevent किया उतना. What is P by A? Sigma. So P by E sigma L by E, that is equal to delta. So stress I don't know. The length is given as MMA ले लेंगे sir length. So 1000 mm by Young's modulus is given, I think. What is the Young's modulus sir? 100 gigapascal. तो 100 gigapascal. तो इसको लिखेंगे 100. Gigapascal is 10 power 3 megapascal. And ये तो mm में रखे सर. Sigma L is this by E is equal to delta. Delta is, don't write 0.2 because 0.1 freely expand होगा. जो भी stress develop हो रहा है additional के कारण. Okay. तो ये होगा आपका sigma will be in megapascal because ये उधर जाएगा. तो कितना आएगा सर? 10 power 4. I think answer is 10. So the answer is 10 megapascal. Am I right, sir? The answer is 10. So I have covered these 22 questions in exactly 2 hours. Okay. 22 questions in 2 hours is वो भी with explanation. It is the most efficient. So I'll be coming up with some more series. मतलब गेट 2026 जो अटेम्प्ट करे उनके लिए फायदा होगा सर. I request you to watch, and if you liked it, आप अपने कमेंट्स शेयर करना. ओके, थैंक यू. विल कम अप विथ नेक्स्ट सेशन सून. ओके, थैंक यू. बाय बाय.